शुरू करें? शुड वी स्टार्ट? ओके। वाटर शेडेड प्रिंसिपल, वाटर शेड प्रिंसिपल। ओके, वाटर शेड प्रिंसिपल। तो आप प्लेबिसाइड रेफरेंडम पे यहां कैसे पहुंच गए, इंडिया चाइना रिलेशंस में? आप रिवीजन कर रही थी, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, रिवीजन शुरू हो गया। वेरी गुड। तो वो किस बारे में है? हाँ, तो वो पहला तो चला गया वो हिस्ट्री में। तो पॉलिटी हिस्ट्री में आपने नहीं सीखा, आप मुझसे पूछना चाहते हैं? इसमें दिया इसलिए मैं बताऊं आपको, मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी आप लोगों की तरह करता हूं। आपने क्या पूछा? वाटरशेड प्रिंसिपल। आपको क्या लगता है क्या होगा वाटरशेड प्रिंसिपल? आप खुद लोग खुद से कोशिश करते हैं? स्मार्टफोन रखते हैं आप लोग? नहीं। गूगल नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। तो आपने देखा कि वाटरशेड प्रिंसिपल क्या है? तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? क्या आया? ओपिनियन सीख कर रहे थे आप वाटरशेड प्रिंसिपल पे? चलिए शुरू करें। जैसे ही उस जगह पे आएंगे वैसे ही इन सारे सवालों को लेंगे। पहले अभी हमें क्या करना है? इन द लास्ट क्लास व्हाट डिड वी डू? इंडिया चाइना रिलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया चाइना रिलेशंस इज इन न्यूज। इधर भैया, मेरी तरफ, है ना? अब आपको काफी मौका मिल गया बात करने का। मैंने आपको पहली क्लास में कहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, पर ऐसे नहीं कि और लोगों की स्वतंत्रता पे उसका असर पड़े। So in the last class, we had started with India-China relations with a basic understanding, a basic framework. First thing that we learned was what kind of a neighbor China is to India. याद है आपको? पहली चीज हमने की थी, we said that generally it is understood, and that is also the statement of the Prime Minister, that it is a complex and multi-layered relations. So when you have these kinds of terms, for example, complex and multi-layered, it means that now you can open up the relations into its different facets. So सबसे पहले simple understanding, दो word की understanding जरूरी है, and then you move on and go into details. So why is it a complex and multi-layered relation? क्यों? Why is it a complex and multi-layered relation? Sometime good, sometime bad. Very good. कभी खुशी कभी गम. There are trade relations which are robust but also conflict on border. मैंने इसी चीज को आप लोगों को थोड़ा ओपन करके बताया था, क्या मतलब है इसका, with the use of what we had learned in the first lecture. क्या कहा था हमने? That in this relation, China is unavoidable as compared to other neighbors because we have a long shared border with China. That long shared border is also matter of dispute. We have a boundary question to be resolved with China. And then we said that we have a significant trade with China. In many of the years, China is our largest trading partner, depending on which source of data you are using. But it is a largest trading partner. So you cannot ignore China geopolitically and geoeconomically. What is happening in China? Because China is right next to us, right? So that's why you are interested always in what Xi Jinping is saying. और एक चीज में सब और इंटरेस्टेड होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लोगों की हॉबी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अपने देश की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा कम पता होता है, पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में सब पता होता है। सो दैट इज वाई, बिकॉज चाइना इज अनअवॉइडेबल। एंड देन when we look at the engagements, we also find that we share rivers with China. So again, फिर से जुड़ गए, we are coupled by the rivers. So again, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम अलग हो सकते हैं, कि हमने अपने साइड की रिवर रख ली, उनके साइड की रिवर उनको दे दी और बोला कि अब we isolate, we don't do business with each other. So this is how we are linked. So unavoidable. So that is what means then that in this relationship you will find matters of cooperation. Cooperation is necessary. At any point in time, you can't say that cooperation with China is not necessary, no matter what view you hold.
Secondly, we see that there is also competition. Competition in the sense of trade. If you look at bilaterally, India would like more access to Chinese market. China would like to continue with the dominant trend in trade that it has with India. And globally also, you will find that countries like India and China, what is common between India and China? Apart from culture, history, civilization that we learned, what is common between India and China? Large population. Number 1 and number 2 country. ये मैं कह चुका हूं, मैं उसके बाद पूछ रहा हूं. So I said, as you were saying, it is right that we are two large demographies. We are large geographies also, meaning we have certain common attributes. So these kinds of countries inevitably would grow. And India and China are growing simultaneously. So when they are growing simultaneously, countries search for same things, similar things. What are they looking for? दुनिया को देखते हैं तो अब क्या ढूंढ रहे होते हैं? What are the three things that any country would be looking for? It would be looking for markets. It would be looking for raw materials. And in order to secure all these, they would be looking for influence. That is basically the subject matter of competition. If India goes to Pacific, it is in pursuit of its interest, not primarily to contain China. पहले इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, ट्रेड है, रिसोर्सेस हैं. उसी तरह से चाइना भी अफ्रीका में जब जा रहा है तो वो क्या ढूंढ रहा है? मार्केट, रिसोर्सेस. सो दैट मीन्स दैट देयर वुड बी कॉम्पिटिशन. समझ में आ गई आपको बात? कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि हम सिमिलर चीजें ढूंढ रहे हैं. वी आर ऑफ द सेम साइज. So before going into conspiracy theories, you can understand why these relations are always in need for adequate management. आपको manage करना पड़ेगा ऐसे relations, and there is no easy solution. And then what did we say? That when we look at the world, we generally see a strategic rivalry shaping up. So China is also a systemically important country. क्या है China? It is a systemically important country. One example of that, क्यों systemically important है China? It is a permanent member of the Security Council. So that is one example. But whether it be global trade negotiations, climate change negotiations, global security negotiations, cyber security negotiations, China would always be an important presence. You cannot wish that away. So China is a reality that you would have to deal with. You cannot wish away China. है ना? टीवी रूम्स में, स्टूडियोज में, यूट्यूब चैनल पे यू कैन विश अवे चाइना, यू कैन इजीली फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर चाइना, बट इन रियल वर्ल्ड चाइना इज अ रियलिटी दैट यूड हैव टू फेस. सो अंडरस्टैंड चाइना एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है कि नेहरू जी ने क्या कर दिया, पास्ट हो गया. The consistent mistakes that we have made regarding China is not understanding it. We don't understand China, right? So let me give you an example. How many states does United States have? Very good. United States की दूरी कितनी है इंडिया से? 8,000 माइल से ऊपर. How many provinces are there in China? Evidence मिल गया that we don't understand China. This is basically what I am talking about. So even at the larger level, that has been one of our follies, that perhaps somewhere we have not been able to understand China. Either we have trusted China too much, or we have in certain sense believed that we would be able to manage China on the basis of the understanding that we have acquired. लेकिन चाइना को लगातार समझने की जरूरत है. दैट इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, आर यू दी हैरी पॉटर जनरेशन? सो हैरी पॉटर में एक डायलॉग है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर. मतलब अगर आप चाइना को दुश्मन भी समझते हैं तो भी क्या जरूरी है? चाइना को समझना. और चाइना के बारे में अवेयरनेस कम क्यों है? चाइना को अंग्रेजी पढ़ के आप नहीं समझ सकते. ऑलराइट. अमेरिका के बारे में इतना क्यों जानते हैं आप? बहुत सिंपल सा है आइडिया. एक ऐसी कॉमन भाषा है जो आप शेयर करते हैं अमेरिका के साथ, विच इज इंग्लिश. हॉलीवुड मूवीज आर देयर, नेटफ्लिक्स इज देयर, HBO इज देयर. सो जनरली यू थिंक US एज द नॉर्मल. वो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह काम करते हैं जनरली, मतलब जैसे कपड़े पहनते हैं.
पर हम अपने ईस्ट में जो नेबर है उसको कम जानते हैं। तो ये अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप पर्सनालिटी के क्लैशेस से बाहर निकल जाएंगे, है ना। आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड स्ट्रक्चरली, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स आर परमानेंट, इंडिविजुअल्स आर टेम्पररी, and every individual is acting in the context of the structure that they exist in, right? So that is what we understood, that it is a complex and multi-layered relation. Here we find the aspects of cooperation, competition, as well as contention, and then there is always a likelihood of conflict. There has been a conflict between India and China in the past, 1962 war, and there is a tension going on at the LAC. So किसी भी समय पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा। All right. So similarly, कुछ न्यूज में था, is there something in news? Now I'm only asking you to do your duty. Your duty is what? You are preparing for the examination, so at least हर ideal candidate को पता होना चाहिए कि आज और कल क्या हो रहा था। तो बताइए क्या हो रहा था, क्या ताइवान को लेके इशू चल रहा है। ऐसे बोल देंगे तो मैं अब भाई देखो, अब 13-14 क्लासेस हो गई, अब नाउ आई एक्सपेक्ट सम डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड्स। मुझे जितना भी मनोरंजन करके बताना था मैंने बता दिया। आप बताइए क्या चल रहा है ताइवान के बारे में एक लाइन में, वो भी इंग्लिश में। अंग्रेजी में एग्जाम लिखेंगे ना, बताइए। अनदर अमेरिकन लीडर, व्हाट डू यू मीन बाय अनदर अमेरिकन लीडर? हैं? तो अनदर क्या हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक? अदर देन स्पीकर, स्पीकर ऑफ व्हाट? हाउस ऑफ, हाउस ऑफ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या हाउस ऑफ पीपल्स कह रही थी। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट ट्राई एंड स्टैंडर्डाइज योर वोकेबुलरी, ट्राई एंड स्टैंडर्डाइज योर वोकेबुलरी, अदरवाइज बहुत लंबे समय तक इस गफलत में रह जाएंगे। मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ, आई रीड अ लॉट, आई नो एवरीथिंग, बट अदर पीपल आर स्कोरिंग। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, कई लोग आपको बता देंगे कि नहीं इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ आता नहीं है, हिंदी मीडियम वाले, वर्नाकुलर मीडियम वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनत करते हैं। आप, यू आर basically understand that all of you are at your own level because of the backgrounds that you come from, but UPSC provides you a level playing field. So what you miss out in terms of background, you can learn in terms of hard work. Learning English to write a Shakespearean novel is not the requirement. The requirement is, अगर 2 शब्द भी अंग्रेजी के रोज सीखेंगे तो क्या होगा? How many days are in the year? 365. मतलब how many words did you learn? देखो बेसिक मैथ्स 730. So that is how, इतना अगर सीख लिया आपने, so the English that we use revolves around 300-400 words, 300-400 words, इतना ही इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश। अब बताइए आप क्या बोलना चाहते थे? Taiwan, very good, very good, I am happy. Yes, China feels threatened in terms of its one China policy. Very good, I am happy. और इसके अलावा ताइवान तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसी चीज हो गई जिससे बहुत ज्यादा हमको मतलब है नहीं, लेकिन न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है। और क्या हुआ? यस, फिर से वही चाइना की फॉरेन पॉलिसी पढ़ने लगे। कुछ ऐसा बताइए जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। Yes, yeah, this was recent. India and United States have started an exercise in a place called Oli in Uttarakhand. Uttarakhand is a state bordering China. So China has issued a statement objecting to Yuddhabhyas. Yuddhabhyas is a military exercise with यूनाइटेड स्टेट्स। सो आप दुनिया भर की जो जानकारी सीख रहे होते हैं उसमें पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? इंडिया को। इंडिया के बारे में अगर कुछ हो रहा है, 2 चीजें आपने सीखी। वन, युद्धाभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, एंड second that India US partnership may be relevant in the context of
India-China relations also, right? Certainly China does not like India getting closer to United States. है ये दो चीजें सीख गए. इसके अलावा क्या सीखा आपने? China is concerned. किसने बोला था? चाइना ने बोला था. ये तो इंडिया बोलता है. इंडिया को बोला था. फिर से वही बात. आप स्पेक्ट्रम के उस एंड पे जाके सीख रहे. देखो जनरली फॉरेन पॉलिसी को इधर से देखना है. कहां से? आप चाइना है, मैं इंडिया हूं. इंडिया की तरफ से देखना है ना. जनरली जो जो रिपोर्टिंग होती है, पब्लिशिंग होती है, वो वेस्टर्न सोर्सेज पे बहुत रिलाई करते हैं. हमारे मीडिया वाले भी थोड़ा पढ़ना लिखना कम कर चुके हैं. तो many a times you will find that there is copy paste. So basically you will find, for example, a common mistake, generally referring to India-China relations as Sino-Indian relations. How many of you have come across it? Sino-Indian relations. आप भी एग्जाम में करने लगते हैं. Sino-Indian relation is not a reference from India's perspective. We would always call it India-China relations. Why? India first. सारे nationalists को भी एक message है, India first. So you are writing an examination in India, so India-China relations. So this is what starts happening if you simply learn foreign policy through headlines. ये छोटी छोटी बातें हैं. So from India's perspective, India के perspective से बताइए. मैं बता चुका हूं आपको that there is some relevance to other relations in the context of China. That is India's position. India would like to resolve the issues bilaterally. It is India's policy that it would not like US's interference. आपको लग रहा है, आपने दिमाग में सोच लिया कि यूएस के साथ मिल जाएंगे और फिर चाइना को हरा देंगे. दैट इज नॉट इंडियाज प्लान. ऑल राइट, इंडिया डज नॉट बिलीव इन अलायंसेस. yes, we would try and do as much of signaling as possible, but we also understand China is here right next to us, United States is far away. ताइवान को भी लग रहा है यूएस आएगा, यूक्रेन को भी लग रहा था यूएस आएगा. so that is something that you should understand. पावरफुल कंट्रीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, है ना, वेरी अट्रैक्टिव. इसीलिए उस तरफ हमारा ध्यान जाता है, पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भूल जाते हैं. सो देन अनदर थिंग हैपन, मैंने आपको इंडिकेशन भी दिया था. यूएन में एक डिबेट हुई. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज बीइंग हेडेड बाय चाइना दिस मंथ. द चेयर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल चेंजेस एवरी मंथ on a rotational alphabetical basis. All the 15 members get to chair the Security Council. So China organized a debate on collective security, including terrorism. Collective security पे debate थी. Terrorism एक issue है which affects global collective security. It is one of the security challenges. So then what did India say there? China chair कर रहा है. So then when India is making a statement, it assumes significance. What is it that India said? Do you think at these places India would start bashing China or start criticizing China? नाम लेके नहीं, but on the basis of principles. On the basis of principles. So what did India say? Collective security cannot be ensured till countries continue to violate territorial integrity and sovereignty of other countries. That is principle. In principle, India is criticizing whose conduct? China's conduct. पर अगर उसी को, डिप्लोमेसी में एम्बिग्विटी होती है, पर अगर उसी को एज ए प्रिंसिपल अप्लाई करो तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया. भाई रशिया इज ऑल्सो वायलेटिंग द सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. सिग्नलिंग कहते हैं इसको. बेसिकली यू आर सिग्नलिंग एंड यू ऑलवेज नो whom are you signaling it to. Secondly, India said that collective security cannot be ensured till countries unilaterally and coercively violate bilateral understanding. ये दो चीजें अगर आप सीख जाते तो आप इंडिया चाइना रिलेशन सीख जाते. This is what India's foreign minister would say at every platform. This is what India would say at most of the platform where it is not directly meeting with China. When it is directly meeting with China, we will go into the details of specific issues. So that is what we are going to learn today. In terms of issues of engagement that we had decided between India and China.
सो पहली क्लास में हमने काफी हिस्ट्री और बैकग्राउंड किया था टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट नेचुरल that India and China would be enemies, because history does not tell us so. The modern context of the relation starts with the British period, wherein on the one hand, India learned from its colonial experience that subjugation of one country by other countries is not acceptable to it because it suffered through it. And China in this period also suffered through it. So China developed the idea of century of humiliation. Have you heard of century of humiliation? Xi Jinping will give speeches and he will highlight this. We have been humiliated in the past, never again. So that is why China is doing what it is doing. So China, apart from being a single party ruled country, Communist Party ruled country, is also very nationalistic in its orientation, right? So that is something that basically is the difference. That if you understand that what India did after independence vis-a-vis China was flowing from the idealism of a young independent country which had a history of colonial subjugation. So that is why we did what we did towards China. What China did towards us is coming from its own process of transition. When China is transitioning to a one-party rule ruled by the Communist Party of China, and then China starts looking at consolidating its territory. When China starts looking at consolidating its territory, it reaches to places like Tibet, which it has never controlled completely in the past. So historically, one reason why we don't find India, China contending with each other, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, from Khyber Pass you may have found examples of incursions into India, but you don't find examples of incursions into India from the eastern side, Himalayan side. History में कभी सुना है? So basically what you understand is this, that most of the times our border was with an entity called Tibet. Tibet primarily is a large geographical region. If you understand, it is the roof of the world. Is it related with monsoon also? Yes. On the one spectrum of how monsoon develops is the Indian Ocean dipole. On the other spectrum is the plateau of Pamir. All right. So it's a geographical entity, large geographical entity defined by its geographical feature, which is difficulty of terrain, high mountainous plateaus. So these kinds of regions have had in the past the ability to develop in relative isolation. All right, they developed in relative isolation. So then Tibet also is a cultural entity, right, whereby we find that Buddhism flourished, and Tibetan Buddhism is quite different from other forms of Buddhism that you will find elsewhere, right? It has a admixture of a lot of traditions, right? So you are saying Theravada Buddhism, lot of traditions. Tantricism also has an influence on Tibetan Buddhism. So unique culture develops in these kinds of regions. So it's also a cultural entity because geography allowed them to live and develop in isolation. So that means that there is a sparse contact with the outside world, है ना? बहुत कम जानते हैं हम तिब्बत को, हमेशा बहुत ही एक तरह से मिस्टीरियस और मिस्टिकल एंटिटी के रूप में देखते हैं जनरली जो भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं. So then it has sparse contact with the outside world. It is developing in relative isolation. Geography is allowing it to do so. And then it is but obvious that as technology advances, this isolation would be affected. ऐसा होगा? पहले आप घोड़े पे बैठ के जाते थे ट्रेड करने, पहाड़ चढ़ते थे, पैदल जाते थे. So there are valleys in Uttarakhand. There are valleys in Uttarakhand which neatly go across Tibet. आप वहां से तिब्बत जा सकते हैं. And there are tribal groups in the districts like Pithoragarh. टूरिस्ट स्पॉट आप सभी जाते हैं, but there are tribal groups who have had a relation of trade with Tibet. So those are traditional relations. Trading communities, nomadic communities linked Tibet with other parts of the world. With India, China was geographically far away. So
with India, China, certainly we can say that we had close cultural relations, at least cultural affinity. When it comes to Buddhism, India is the source of Buddhism. And the relations are developing through those sparse contacts which are permitted by geography, depending on what kind of technology you have. So nomadic groups, trading groups are engaging with each other, especially in the border areas. And then you find that China's control over Tibet has been dependent on one factor: how strong or weak is the central authority in China. So strong Chinese emperors wanted to exercise their suzerainty over Tibet. So there have been occasions when China has controlled Tibet, but mostly China after around 16th century indirectly controlled Tibet. So when there is a strong authority in China, you will find that there is an attempt to control control Tibet strictly, and when there is a weakness in Chinese central authority, you find that Tibet has lived in relative autonomy, right? It has been relatively autonomous. So there is that element also, right? So understanding Tibet in any one way is very difficult. Understanding any country in any single way is very difficult. Through a single word is very difficult. But you can understand how culture, civilization, or an idea of a geographic entity developed. So we understand that in the 20th century, in the 19th, 20th century, Tibet had the same temporal and spiritual authority, meaning Tibet's ruler and Tibet's spiritual leader was one and the same, and that is in the office of the Dalai Lama. Dalai Lama is not a name, but it is a office, right? Spiritual leader of the Tibetan Buddhist people generally. But even in Tibetan Buddhism, there are a lot of sects, a lot of different monasteries, right? So then we understand broadly that 19th, 20th century, Tibet retains certain degree of independence under the authority of Dalai Lama, right? Temporal as well as spiritual leader of Tibet. And then we understand, as I said, when technology changes, isolation would end. So we understand that the Britishers, when they came to India, they looked around India, and Britishers were good strategists, good tacticians, क्योंकि दुनिया भर में लड़ते हुए आ रहे थे. So that is what they did. So they surveyed Tibet. So many of the accounts, if you want to learn about Tibet, ये YouTube channel वगैरह से मत सीखो. There are a lot of old books on Tibet written by people who have surveyed Tibet on foot. पैदल चल के गए तिब्बत, सर्वे किया, and that is what the Britishers promoted, right? So you would recall, for example, a simple idea that it was the Britishers who first decided what is the height of the Mount Everest, है ना? And Mount Everest is basically also part of Tibet, right? Tibet is a large Himalayan plateau. So one side of the Mount Everest is in today's Nepal. Nepal also abuts Tibet. So that is something that you will see. The Britishers, through their surveys, tried to understand Tibet, all right? And thereby Britishers also exercised their influence to enter into agreements with or involving China, determining the borders of Tibet. They wanted to retain Tibet as a buffer state, right? Never as strong to challenge India's interests, but providing a large geographical space to buffet India against any external threat. ऐसे आप देख सकते हैं. So what we see, Tibet's story today is a story of influence of larger powers surrounding it. Tibet itself never had the aim or ambition of dominating anyone, right? So Tibet has been dominated, and that is unfortunately how it will be. So some scholars would say that if China does not control Tibet, who would control Tibet? India, right? Because that's such a significant geographical territory. So Britishers then surveyed Tibet. Britishers then promoted relations with Tibet, sending representatives to them, signed agreements with them. So thereby British India established trading posts in Tibet, trading relations with Tibet, appointed representatives with Tibet. That is something that happened. And then of course we have spiritual affinity. So Buddhists in India, Buddhists in Tibet have
a common shared civilizational heritage, and we have a mountain called the Kailas mountain. Kailas mountain is important in Buddhism, in Hinduism, in Jainism, all right, and in also Chinese local traditions. So that also linked us. There is continuous Kailas Mansarovar pilgrimage. So that is there. Now in 1914, the first significant step to determine the boundaries between Inner Tibet and Outer Tibet, and then Inner Tibet and India, were made by the Britishers in what is called the Simla Conference. And Simla Conference of 1914 resulted in the Simla Accord. Simla Accord then basically determines the boundaries between India and Tibet to that extent, and from that comes the formula of the McMahon line. McMahon line is based on the idea of high watershed principle. High watershed principle simply would mean किसी भी ऊंचाई की जगह से पानी को गिराओ, right? So water would then flow in both the directions. So highest point on the mountain, ridges on the mountain, then becomes the basis of the boundary, which is difficult to control militarily. आप diplomatically ऐसी line खींच सकते हैं पहाड़ पे, but in the mountains to control that kind of boundary is always difficult. But that is how it was determined, McMahon line. So McMahon line is the basis for what we think is our border in Arunachal Pradesh with China. McMahon line is in the Arunachal Pradesh region today. So that is something that we see, we understand, is one British era understanding of where the borders came from. There is cultural and civilizational idea also. I am not ignoring that, but understand that there is other process that is also going on, right? So then in 1949, पिछली क्लास में हमने कहानी यहीं पे खत्म की थी ना, 1949, what has happened in China? In China, you have the emergence of a political entity called the People's Republic of China. So our diplomatic relations are with the People's Republic of China, right? Ruled by the Communist Party of China, right? And then you have another conception of China, that is Republic of China. Republic of China is in the island of Formosa, which is now known as Taiwan, and the Chinese would call it Chinese Taipei. All right, China क्या कहेंगे, कहेगा ताइवान को Chinese Taipei. So then there are certain questions about which China is confused, which is what? Where is its exact boundary? So any country would like to have a maximalist boundary. जितना मिल जाए उतना कम है. हमने देखा था बाउंड्री चाइना के किन देशों के साथ है. Did we see the boundaries? So many of the parts of China today historically were not part of China. It is understood. So every country, and I am saying every country, would like to have a maximalist boundary. अगर allow किया जाए तो आपका भी सपना होगा ना, और भी बहुत ज्यादा हो सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन शुड बी इंडियाज ओशन, है ना, हम कंट्रोल करें. सो ये बेसिकली आइडिया है. तो चाइना इन अगर आप बहुत ही बेनेवरेंटली कहना चाहते हैं तो ये कहिए कि चाइना इज कंफ्यूज्ड वेयर एग्जैक्टली आर इट्स बाउंड्रीज. व्हाई? बिकॉज it is now a modern day attempt to define the boundary of a country which is simultaneously also a civilization. A civilization which defined itself as the center of the world. अभी पास्ट में आप ऐसा सोचते रहें तो अभी मॉडर्न डे वर्ल्ड में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज सी देखो, जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, राइट, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ईगो बाउंड्री. साइकोलॉजी में कहते हैं देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ईगो बाउंड्री. व्हेन यू आर इन द क्रैडल, तो आपको लगता है, बच्चों को लगता है कि पूरी दुनिया मैं ही हूं, राइट, द होल वर्ल्ड इज मी. एंड देन as you grow up, you start understanding that not the whole world is not you. That is why a kid cries.
कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, किसी को मेरी बात बिना कहे समझ में नहीं आई, राइट? एंड देन यू स्टार्ट डिसाइडिंग, डेवलपिंग ईगो बाउंड्रीज. You start understanding this is me, this is the other person. And then when you are adolescents, meaning 15, 16, 18, ऐसा जब आप जा रहे हैं उस फेज में, तो आप क्या होते हैं? You are the center of your universe. And for you, your universe is the universe. पर ऐसा है नहीं. Then when you become adult, जब लाइफ के धक्के लगते हैं आपको, right? For example, you compete against others, somebody becomes a topper, somebody becomes a teacher's favorite, right? So on and so forth. Then you start realizing, that is called the process of growing up. Then you start realizing, oh, I am only one among billions of people living in the world. So that means the world is not going to run according to me. मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है. That is part of the growing up process. So basically we can understand that even China is in the process of infancy or at best in the process of adolescence. अभी भी चाइना को लग रहा है कि दुनिया उसके हिसाब से चल सकती है. अब चाइना के पास बुरे एग्जाम्पल भी हैं, बैड इन्फ्लुएंसेस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल द बैड इन्फ्लुएंसेस स्टार्ट कमिंग फ्रॉम होम. कभी कभी आपको बहुत ज्यादा पैम्पर कर दिया जाता है. यू आर गिवन अ सेंस दैट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलराइट? और कभी कभी आपको ऐसे दोस्त भी मिल जाएंगे. सो आपकी फ्रेंडशिप किस बात पे होती है? आपका दोस्त हर चीज में आपकी तारीफ करे. बुराई करने वालों से आप दूर भागते हैं. somebody who shows you your mistakes, you don't like them. So China has some bad influence. What kind of influence? Not Russia, United States. चाइना को दिखा कि ये ग्रेट पावर तो ऐसा करते हैं, बड़े देश हैं, बड़ा पॉपुलेशन है, बड़ा टेरिटरी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो फिर दुनिया पे दादागिरी कर सकते हैं. That is what China is learning, right? China also is a new state after all. So that is what we see, that it is part of the nation building process or the project as China since 1949 has embarked upon. तो simple बात है, if you continue to grow in the trajectory, if you continue with the belief that you are center of the universe, what would happen? You would develop fictitious relations with everyone. आपका ईगो इतना बड़ा होगा, सामने वाले का भी ईगो इतना बड़ा होगा, फिर क्या होगा? दोनों के ईगो के लिए स्पेस नहीं है. ऐसा होता है, आपको दूसरों की बात बुरी लग जाती है, अपनी बात पे आप ध्यान नहीं देते हैं, ऑलराइट? So basically, if China could reach to an understanding itself, what it can get and what it can't get, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. पर ऐसा होता नहीं है. हम सुधरते नहीं हैं जब तक हमको कोई धक्का नहीं लगता या कोई बेटर एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट? सो द अदर कंट्रीज वोंट हैव अ प्रॉब्लम टिल चाइना स्टार्ट्स क्लेमिंग देयर टेरिटरी. क्योंकि और लोग हो, जैसे दुनिया में और लोग भी हैं, वैसे दुनिया में और देश भी हैं. सो दे ऑल्सो हैव देयर कॉन्सेप्शन ऑफ द टेरिटरी और द बाउंड्री. So then the clashes or the contention starts on the basis of differing conceptions of territory, right? अगर चाइना दुनिया में अकेला होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट चाइना like other countries is surrounded by some neighbors who also have their historical conception of borders and territory. They would also like to control their territory as much as possible, right? And then China is also surrounded by larger countries. So for example, China had a boundary war with Russia in 1969. China और रशिया के बीच में भी लड़ाई हुई थी 1969 में, USSR and China, right? Similarly, India and China had a war in 1962 because what we thought was very clear, obvious that this is our boundary. China never said anything about it. Initially, it did not say much. So that is something that you should understand, China's ambiguity. China never says yes, China never says no. आप समझते रहिए. And that is something that you should not do in the examination. You should clearly state what you want to say. China always has an ambiguous approach. China never says yes, never says no. समय आने से पहले चाइना कुछ नहीं कहता, right? So we failed to understand Chinese ambiguity. We thought that China understands where our borders are, and we thought that the previous century was century of the European colonial powers. Now the coming centuries would be centuries of
the newly independent countries. So that's where the idea of an Asian century comes up. So India believes that Asian countries would rise and they would help in building an equitable world. बराबरी की दुनिया बनाएंगे हम. और in that world, India believes that two countries, India and China, are important, right? They have much in common. They can coexist. Even today, India believes that India and China can coexist peacefully. That is the understanding that we started with. But unfortunately, that is an understanding that China did not share. All right, because China's major concern were its territorial consolidation, right? That is something that happened. So when the issue came up for clarification, greater clarification, what we see is we start developing differences. Our differences started emerging, coming to the fore. And then you would see that initially there was some sort of negotiation, but these negotiations did not yield a result. And ultimately what happened? 1962 war, which was the first example of unilateral aggression of China, that China unilaterally wants to do things. And China unilaterally wants to use coercive measures. China unilaterally wants to aggress against other countries, right? So that is a pattern that we now also criticize. What do we criticize when we criticize China? It's unilateralism. Unilateralism means my way or the highway. या तो मेरी बात या फिर आप अपना देख लीजिए, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है. That is one part of China's conduct that we don't like. That is one part of China's conduct that the world also doesn't like. For example, there was a summit of NATO recently. कहाँ हुआ था? In Madrid, Spain. NATO समझते हैं आप ना? North Atlantic Treaty Organization. So for the first time, NATO countries have now recognized China as part of their strategic challenge. So NATO says China is not an adversary. तो पहले पहले आप किसी को एडवर्सरी नहीं ठहरा देते. NATO says China is not an adversary, but Chinese unilateral aggression and coercive measures, militarily, economically, challenges our interests, challenges our values. That is what NATO is also saying. तो यानी इंडिया को प्रॉब्लम है. इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है? What China did with India. And then now, when China is continuing with its conduct, what is happening? It is creating its own enemies. ऐसा भी हो रहा है. All right. And it is a very crude way of understanding that an enemy's enemy is a friend. But that does not mean that any other country would become your best friend only because they are enemies with other country. So it is an interest based world. So what we see currently is that on the one hand, our issues with China are yet unresolved, and we don't see a possibility of, on the basis of current conduct of China, that being resolved, but we would make efforts. So thereby what happens is we also look at our options. What are our options? So there are always two options that we have vis-a-vis China. क्या option है? One is internal balancing, internal strengthening. You have to develop your power. China would only understand the language of power. Peace can only be talked about powerful. Even Mahatma Gandhi believed that non-violence is an option of the powerful, not the weak. All right. So even for sustaining peace, bringing peace, you need to be powerful. That's why you need a cohesive society. आपस में लोग हमारे देश में ना लड़ते रहें. Cohesive society. You need a stable polity. You need a capable and modernized military. And for that you need a stable and prosperous economy. So that is one option that India always has vis-a-vis China. क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप चले जाते हैं अमेरिका के पास. Our first option is always to strengthen ourselves. Only when we become strong, we would be able to contend with China. Internal balancing कहते हैं इसको. Internally strengthening yourselves. Right? Xi Jinping का मैसेज आया आपके पास? आ गया?
नहीं, तो then second option is external balancing. What is external balancing? External balancing can be in a spectrum, right? One meaning can be, an extreme meaning can be being in alliance with other countries. NATO is a form of alliance, right? Military alliance, which is what? An attack on one member of alliance would be considered to be an attack on all the members of alliance. That is the idea of collective security. मैं केवल कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, नेटो की बात नहीं कर रहा. नेटो इज एन अलायंस, नेटो इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. सो दैट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ अलायंस. अलायंस बहुत लूजली इस्तेमाल करने लगते हैं हम लोग. इट इज एन अलाई, ये कंट्री अलाई है हमारा, ये कंट्री अलाई है हमारा. अलायंस का एक टेक्निकल मतलब होता है दैट इट हैज अ वाइटल एलिमेंट्स ऑफ क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्लूडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी. Do you think India wants that, prefers that? Do you think India should enter into alliances with other countries? नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, शर्माना नहीं चाहिए. प्रेफरेंस है आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का. India traditionally has been against military alliances. India traditionally has been against military alliances. That is one part of our policy of non-alignment. Right? Why? We may have one war to fight with China, but if we are an ally of, let's say, United States का हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है. All right? In the Cold War period, USSR, then it went to Afghanistan, then Vietnam. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जरूरत तो कम पूरी होगी, हम अपने आप को एक डिफिकल्ट पोजीशन में कर लेंगे जब हमको हर चीज में अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट. वी वांट इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. दैट इज कॉल्ड, उसको नॉन अलाइनमेंट कह लो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह लो, या मल्टी अलाइनमेंट कह लो. इट्स अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस. एवरी कंट्री वांट्स टू मैक्सिमाइज द स्पेस फॉर मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस. दैट इज कॉल्ड व्हाट? That is called strategic autonomy. Strategic autonomy is the ability to take independent decisions on the matters of national interest. What is strategic autonomy? Strategic autonomy is the ability to take independent decisions on the matters of national interest. That is what every country would like to maximize. India also believes in strategic autonomy. What is non-alignment? Non-alignment is not aligning with a particular interest in a fixed way. All right? When you are non-aligned, it means that you are deciding that we are not going to be aligned with a particular interest once and for all. We would retain the option open. So non-alignment is a quest for merit-based treatment of issues. That we take a decision on any issue on the basis of its merits. All right? That is what non-alignment in its ideal sense is. That we would like to decide on the basis of merit. Non-alignment is not neutrality. Non-alignment again is a way of retaining independence of foreign policy choice. All right? That is one meaning of it. And it, in the Cold War period, it meant not aligning with any of the military blocs. That is what we decided. US has a military alliance, USSR has a military alliance, both of them would like you to be with them. अगर आपने यूएस का साथ नहीं दिया तो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा. यूएसएसआर के साथ थोड़ा कम था ये, इसीलिए इंडिया फाउंड इट इजियर टू डेवलप रिलेशंस विथ यूएसएसआर. ऑलराइट, सो अगेन, बट दैट पुश वाज आल्सो देयर, दैट USSR also wanted to expand its influence through its alliances. So you had NATO led by US and you had Warsaw Pact. सुना है नाम आपने? Warsaw Pact led by USSR. What it is that India decided? Not aligning with both of them. So recently, what is it? किसी ने इसी क्लास में बताया था ना कि आर्टिकल पढ़ा उन्होंने, फेंस इंडिया इज अ फेंस सिटर, ऐसा लिखा हुआ था, किसी ने आर्टिकल लिखा था. So that was an interesting question that was asked to Dr. Jaishankar also in one of his interactions. So
what is it that he replied? That I am sitting on my side. I am not sitting on the fence. India is not sitting on the fence. India is sitting on its own side. Meaning we would take interest on the basis of our considered interests. So do you foresee any difference in non-alignment and what Dr. Jaishankar said? पोलेमिक्स के लेवल पे आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा है और फिर उसको जोड़ दो किसी पर्सनालिटी के साथ, बट आइडियाज की बात कर रहे हैं. इट इज अबाउट रिटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. दैट इज व्हाट कंट्रीज वुड लाइक टू डू. And countries are not biological entities. Ultimately, it is made by their people, their political leadership. But at any point in time, any political leadership would like to retain the space for decision making. So non-alignment in the Cold War period meant not being permanent part of any military alliance. But that did not mean that when there would be a need, we would not seek the assistance of any great power. So that's why we signed an agreement of peace, friendship and cooperation with USSR. Why? क्यों हुआ ऐसा? Because understand this, that 1949 PRC emerges. When PRC emerges, it has affinity with USSR. What kind of affinity? Ideological affinity. First of all, both of them have certain ideological affinity. A preference for communism as an ideology, achieving the state of statelessness. Communism is eventual state where there would be no state, everyone would be equal. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसको पाने का कोई आसान तरीका नहीं है. That's why communism has failed most of the times. So that's the affinity. Similarly, you would find that this affinity then translates into domestic and foreign policy cooperation. बट जब आप कहते हैं कि ये कोऑपरेशन केवल आइडियोलॉजिकल था, आप भूल जाते हैं कि दीज कंट्रीज ऑल्सो शेयर्ड बॉर्डर्स. सो इट वॉज अ रिलेशन बिटवीन नेबर्स ऑल्सो, राइट? सो देन हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट वुड कंटिन्यू? सो व्हेन चाइना बिकेम इंडिपेंडेंट, इट्स क्वेस्ट वॉज मॉडर्नाइजेशन, इट्स क्वेस्ट वॉज रिफॉर्म्स. सो देन रिफॉर्म के आइडियाज जो आए वो थे, फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट लीप forward. A policy of industrialization was adopted, whole scale industrialization, that incentivized people moving away from agriculture and develop industrial base. ये आइडिया उनको दिया यूएसएसआर ने. ऑल राइट, सो उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. दैट इज द प्रॉब्लम विथ अ स्टेट विच इज ऑथोरिटेरियन. डिसीजन ले लेते हैं, इंप्लीमेंट करने लगते हैं. सक्सेसफुल हुआ तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, अगर फेल हुआ तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ थी. ग्रेट लीप फॉरवर्ड. व्हाट हैपेंड? चाइना फेस्ड ग्रेट फेमिन. तो बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं ना कि चाइना तो कुछ भी खा लेते हैं चाइनीज. पहले तो वो स्टीरियोटाइप है, राइट? फूड हैबिट्स, आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं सबको अच्छा लगे. इंडिया के अंदर भी, इन माई स्टूडेंट लाइफ, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो आई वुड ऑलवेज फाइंड दैट हर दिन किसी न किसी इंडिया के पार्ट वाले को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी मेस के खाने के साथ. फॉर एग्जाम्पल, some people won't like when there is a biryani day because some people don't like eating rice. That's a reality. Some people have a preference for chapati, but rice eaters don't like chapati. That is not their staple food. So that is the fundamental difference that you will find. And those who can eat both would not complain, right? Would not complain. So there is always a difference in terms of preferences. So you see the food habits that we see developing in China. For example, when the coronavirus crisis started, we started talking about wet animal markets, जहाँ पे ऐसा हुआ होगा. So then people made a lot of weird comments. For example, Shoaib Akhtar, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, made a video. उसमें बहुत ही ऐसा कह रहे हैं कि चाइनीज कुछ भी खाने लगता है. ऐसा नहीं. It has a context, right? China faced significant famines. Agriculture was destroyed in China during this period. Millions of people died. Millions of people died not because somebody shot them. Millions of people died because the leadership at the top took a whimsical decision to whole scale transform the country. And a country like China can't be transformed. Then agriculture sector destroyed. Then famine. People are hungry. Then when you are hungry, you will eat anything. All right? Okay. So famines, destruction of economy, right?
And then when the spotlight came to the leadership of Mao Zedong, ये तो माओ साहब तय कर रहे हैं, right? Mao Zedong. So then what the leadership does? It then moves towards cultural revolution. हमारी इकोनॉमी फेल हो जाएगी, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो जाएगी, तो हम किस पे ध्यान देंगे? कल्चर पे. अब चाइना को किसकी जरूरत है? कल्चरल रिवोल्यूशन की जरूरत है. तो कल्चरल रिवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ? A personality cult of Mao developed, right? Personality cult of Mao. Young people, young students were given a little red book, sayings of, statements of Mao. And in this period, what happened? Even those who were in the Communist Party were killed, but basically they were suppressed, beaten. Even the father of Xi Jinping was jailed, beaten, humiliated, right? Second rung leadership, जिसको भी लगा challenge कर सकता है माओ के leadership को, they were suppressed. So this is also a whole scale period of instability in China. And when you are domestically, अब हमारी अगर domestic policy fail हो गई, तो हम क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान देंगे. किस बारे में बात करेंगे? फॉरेन पॉलिसी के बारे में, है ना? तो फिर देन व्हाट यू सी इज 1962 war. 1962 war. It is also coming from failures of China to deal with its own issues. So this is a period in which China, जो कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि. So that is what China is doing. And to have a destructive neighbor around you is destructive for yourself also. So then this is a period in which Great Leap failed, in which cultural revolution failed. So then you see USSR moved away from the period of Stalin to the period of Nikita Khrushchev. Stalin के सामने तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं था, because Stalin was a match to Mao and USSR was a powerful country. अगर स्टालिन का को अपोज करते तो फिर माओ साहब शायद हटा दिया जाता उनको. But when Nikita Khrushchev came, the next leader of USSR, the differences between USSR and China started coming to the fore. कि तुमने गलत फॉर्मूला दे दिया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फेल हो गया, देखो ये हो रहा है. So then you have what is called the Sino-Soviet rift. सुना है आपने ये टर्म? Sino-Soviet rift. Differences between China and USSR started appearing, right? एक तो बॉर्डर पे जो भी देश बॉर्डर शेयर करेंगे, ये समझ लो उनके बीच कोई ना कोई कॉन्टेंशियस इशू रहेगा, डिस्प्यूट के चांसेस रहेंगे. आइडियोलॉजिकल एफिनिटी थी दुनिया. USSR also wanted to have its influence, so it assisted China, but then it did not remain for long. So on the issue of ideology, whether there should be an effort to spread communism internationally, on the issue of personality, Mao was a whimsical figure by this time, and then on the issue of borders. So that is basically the issue of differences between USSR and China, Sino-Soviet rift. So when Sino-Soviet rift happens, you have the greatest example of that, peak of that is 1969 border war. China thought कि अब तो हो गया काम, अब USSR may use a nuclear weapon against us. अब USSR is going to nuke us. अब तो डरने वाली बात है. That is something that happened, and this is something that you should remember. आज USSR, आज रशिया और चाइना की दोस्ती है, but that दोस्ती sits on an unstable ground, which is what? That they still share a border. कभी ना कभी वो सवाल आएगा, right? Especially in the eastern region of Russia, which is sparsely populated. वहां पे Chinese population is increasing, all right, in the eastern side of Russia. So interest के बेस पे होता है कोऑपरेशन. सिंपली केवल आइडियोलॉजी शेयर करने से नहीं हो जाता है, इंटरेस्ट शेयर होना चाहिए. साइनो सोवियत वॉर, तो ये देख रहे हो एक ही डिकेड है, ये भी एक ही डिकेड में हो रहा है, 1950s and then 60s. So don't forget the context, right? So then what happens?
So then here you have the context. What is the context? So on the one hand, you have one globally what is happening, Sino-Soviet rivalry or rift. On the other hand, what you would see is US पाकिस्तान फ्रेंडशिप. इसी पीरियड की बात है, इसी पीरियड की बात है. अब क्या होता है दैट दिस इक्वेशन इज यूज्ड बाय यूएसए टू ओपन अप टू चाइना. यूएस यूजेस पाकिस्तान's relations with China to find an opportunity to open up with China. Why is US doing that? उसको तो अच्छा ही लगेगा ना, जो चाइना और यूएसएसआर की दोस्ती थी वो अब टूट रही है, अब हमारे पास चांस है. और चाइना क्यों अट्रैक्टेड है यूएस की तरफ? बिकॉज चाइना अंडरस्टैंड्स दैट यूएसएसआर एंड यूएस डोंट लाइक ईच अदर. So that it is a pragmatic decision to open up to USA. So that is something that would happen, right? So you would see that this is a period where you would be seeing an opening up between USA and China. USA and China open up during this period, right? आपने इस period के बारे में सुना होगा कुछ, अगर तो सुना होगा पिंग पोंग डिप्लोमेसी. सुना है आपने पिंग पोंग डिप्लोमेसी? Ping pong diplomacy. Ping pong basically is table tennis. Ping pong, table tennis. So US starts opening up with China. तो पहला क्या किया उसने, एक टेबल टेनिस टीम भेजी. ये किसका आइडिया था? अमेरिका के अंदर काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं ये फॉरेन पॉलिसी में ड्यूरिंग द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्सो जनरली रिगार्डेड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरली राइटिंग्स ऑन डिप्लोमेसी. इज्जत करते हैं लोग हेनरी किसिंजर की बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बट हिज व्यूज ऑन इंडिया वर नॉट वेरी गुड. ऑलराइट, जो किसिंजर निक्सन पीरियड आप याद करेंगे, सो दे हैड यूज्ड सम चॉइसेस्ट वर्ड्स फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राइट? तो इस समय अमेरिका इंडिया को पसंद नहीं करता था, डिस्पाइट इंडिया एंड यूएस बीइंग डेमोक्रेसीज. तो ताली दो हाथ से बजती है. Some people would say that India had anti-American feelings, but we should also see what was America's behavior towards us. If we opposed America, America made it a point कि आपसे बदला ले लेगा. For example, there was PL 480 program. याद है आपको? When we imported wheat from America, but when we criticized American intervention in Vietnam, अमेरिका स्टॉप दैट प्रोग्राम. मतलब आपको आपकी मदद भी कर रहा है, लेकिन आपको ये दिखा भी रहा है कि तुम जो है मांगने आए हुए हो, राइट? दैट इज वेयर वी स्टार्टेड. ईगो पे लग गई बात. दैट इज वेयर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ डिपेंडेंसी. दैट इज वेयर वी डिसाइडेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. इट्स अ डिफरेंट मैटर दैट इट फेल्ड, बट दैट इज वेयर इट हैपेंड. सो हेनरी किसिंजर्स आइडिया वाज कि चाइना से दोस्ती शुरू करते हैं. चाइना से दोस्ती शुरू हुई, पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1971. And then 1972, what happens? So till this period, USA had recognized Republic of China as the real China. Republic of China, which is Taiwan, which was the member of the UN, right? UN Security Council की परमानेंट सीट भी ताइवान के पास थी. अब क्या हुआ, यूएस और चाइना में दोस्ती हो गई. तो 1972, with the help of US, PRC became the permanent member of UNSC. बेचारे ताइवान को निकाल दिया जाता है. So that is how what has happened in the past also, you should remember. So then in this period simultaneously what is happening? सालों को साथ साथ रख लोगे, years. So you will find that India and USSR also signed a treaty of Peace, Friendship and Cooperation 1971. So that is the context in which it is happening. The context is now USSR is also keen on developing those relations with those countries which are either opposed to United States or may have some problems with the United States, or at least have said that they are neutral, that they would at least not go against USSR. So India's relation with USSR was not so much of an alignment, but it was a relationship which
was based on the idea that we would not act against each other. हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, right? In the United Nations in the 1950s, favorable votes for India on the matters of Jammu and Kashmir came from USSR. तो ये भी था कि आपने देखा कि भाई जहां यूएस यूके ये लोग हमारा अपोज करते हैं, USSR does not do so, right? And you always need a strong friend. So India USSR friendship also happens in this particular period. So that is basically what gives you an idea of a non-alignment of a country or strategic autonomy of a country, or now we call it multi-alignment. What is multi-alignment? Multi-alignment again is about retaining that space for independent decision making. So now we say that this can be done by simultaneously maintaining engagements with major power centers in the world. All right, so that is multi-alignment. Simultaneously engaging with major power centers in the world. For what purpose? For what purpose? For hedging your risk. एक देश के साथ आपके संबंध हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, तो तीन चार के साथ अच्छे हैं तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं. दैट इज ऑल्सो अ क्वेस्ट फॉर रिटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द स्पेस फॉर डिसीजन मेकिंग. सो आप इंडिया चाइना रिलेशंस को बायलैटरली समझ सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट को भी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी थोड़ा याद करना जरूरी है, राइट? So, for example, and I am also trying to bring you to what you have learned in world history. World history किया है आपने ना? हाँ, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं. कोरिलेट कर लें आप फॉरेन पॉलिसी से. अब 1962 में और क्या हो रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री में? In 1962 what else was happening? Yes, Cuban Missile Crisis हुआ around the same time when there is a war between India and China, right? ऐसा हुआ. Now when you see this, you find that initially we sought help from the US. हमने सबसे मदद मांगी. We sought help from the US. We asked for help. US under JF Kennedy advanced some help to India, because now at that point in time US had an ambiguous position towards China. Certainly it did not see China as a friend, early 1960s and presidency of John F. Kennedy. So, but that help was short-lived, right? It was never a complete security guarantee to India. Some form of cooperation is there, but then you see, it is always good to remember that great powers have short-lived interests, right? Short span of attention. Great powers have short span of attention, right? So here, जब ये great power अपनी लड़ाई में busy हैं, तो फिर it means that support to India gets compromised, है ना? यूएस से जो मदद मिलनी चाहिए थी, क्या यूएस आया? क्या कोई आया हमारी मदद करने के लिए? नहीं, बट वी हैड सॉट हेल्प. सो अगर वहां पे डिसाइसिवली यूएस ने डिसाइड कर लिया होता इंडिया की मदद करना, देन मे बी, बट देन ऑफ कोर्स एज नाउ सो वाज यस्टरडे. नेहरूज इंडिया और मिस्टर मोदीज इंडिया इज नॉट एन ईजी पार्टनर टू डील विथ. क्यों? वी वुड ऑलवेज स्टैंड फॉर आवर सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये देश की बात है, तो दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस. नेहरू बिलीव्ड दैट इंडिया इज एन एक्सेप्शनल कंट्री. वी कैनॉट बी अ जूनियर पार्टनर टू एनीवन. मिस्टर मोदी ऑल्सो बिलीव्स दैट इंडिया इज एन एक्सेप्शनल कंट्री. वी कैनॉट बी अ जूनियर पार्टनर टू एनीवन. झगड़े की बात तो बहुत सारे लोग बता देंगे कि क्या क्या कमियां थी मिस्टर नेहरू में या मिस्टर मोदी में, क्या क्या कमियां हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स, राइट? इट इज ईजी टू जज मिस्टर नेहरू बिकॉज अब 70 साल का स्पेस है हमारे पास, राइट? सो हाइंडसाइट में किसी को भी जज करना आसान काम है. ये होता तो क्या होता. हम मिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी का असेसमेंट कब मिलेगा हमको? आज से सही असेसमेंट जब समय थोड़ा बीत जाए, 10 साल 20 साल बाद. पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है
कि at that point in time, depending on what material capabilities India had, it would think about how to retain its space for independent decision making. Today also. So Indians are known for being tough negotiators, right? We don't easily accept things. ये देख लो WTO में या UN के अंदर, राइट? सो ये बातें हैं. अब एक सवाल आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, कि इंडिया ने चाइना को अपनी सीट दे दी थी. ऐसा कितने लोगों ने सुना है कि इंडिया ने चाइना को अपनी सीट दे दी थी? हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दी थी. आप सब, नेहरू जी ने दे दी थी. ये बताइए, जस्ट टेल मी, वेयर हैव यू कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन? Where exactly? What is the source of this information? Is there a government of India document which tells you this? कहां सुना है आपने? YouTube पे क्या? हाँ, तो बेसिक बात है कि there are speculations, and we tend to believe in speculations dependent on our bias. हम किसी को नापसंद करते हैं तो हम उसके बारे में कोई भी खराब चीज मानने को तैयार हो जाएंगे. हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसकी किसी भी बुरी बात को इग्नोर करने को तैयार हो जाएंगे. दैट इज what all that I am submitting to you. So first of all, independent India believed that both India and China are going to be important countries. It is good to have good relations with China as a large neighbor, right? You recognize the fact that any country with a large geography, any country with a large demography, any country with cultural and civilizational past, and also natural resource endowment is going to become a significant player in global politics. ये तो तय है कि चाइना जैसा देश आगे बढ़ता ही बढ़ता है. जैसे इंडिया को स्ट्रांग बनना ही बनना है, ये तय है, वैसे ही चाइना को भी बनना ही बनना है. तो दैट इज basically practically recognizing that we would have a strong neighbor on our borders. So what kind of relation should we have with it? Friendly relations. That was the choice that India made. So there is an element of idealism, but there is also an element of recognizing the reality. That is my take on this, right? So एक चीज हमने ये की, तो इसका मतलब ये था that if a seat was offered to India in place of China, India's position was not at the cost of China. We would like to become a member of the Security Council, but not at the cost of China, right? Whenever this discussion came, whatever is in the public domain, that is the position that we know was taken, that not at the cost of China. We would not get into great power politics, great power game, which basically pits us against China. ये clear है. अब इसको आप समझ लें कि हमने सीट का मना कर दिया. दूसरा Permanent 5 category was decided in 1945 itself, when India was not independent. And permanent 5 countries, who are the permanent 5 countries? Countries who were allied countries in the World War, who won the World War. तो ऐसा नहीं कि डिसीजन हमसे पूछ के लिया गया था, राइट? ऐसा नहीं है कि हमको ऑफर किया इनिशियली व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर, जब सिक्योरिटी यूएन का बना, चार्टर के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, तो वो तो पहले ही हो चुका था, राइट? उसके बाद एक्सपेंशन की बात हुई. तो एक रिपोर्ट कहती है, एक जो पर्टिकुलर व्यू वो ये कहता है कि यस, इन द डिप्लोमेटिक सर्कल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, विजय लक्ष्मी पंडित, द सिस्टर ऑफ पंडित नेहरू, वाज द एम्बेसडर टू यूएस. सो a particular senator may have floated this idea that how would you like to become a member of this permanent member of the Security Council. Secondly, in Mr. Kissinger's book or on many, देखो पहले तो उस जमाने के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है. So a lot of things we know through the writings of Mr. Nehru himself, the letters that he wrote. So Nikita Khrushchev, the leader of USSR, came to India and he floated this idea, how would you like to become the member of the Security Council? So these two instances are there. When there is some idea that at least some discussion on this took place. But at what platform? Did ever United States offer us it officially? Did any of its president convey it
to the Prime Minister of India officially? Was the proposal in the advanced stages? So India saying yes and no would have come only when there was a concrete proposal. India's principal position was, yes, we would like to become a member, but not at the cost of China. All right, that came from the realization that we don't want to in any ways compete with China. We would like to have peaceful relations with China, right? So when Khrushchev gave this idea, again, that was not discussed at length. So then how do we know that they were serious about it, right? And secondly, what else would they have wanted from us in return? We don't know. How would we know it? My suggestion is the government of India should start declassifying documents. Western democracies have a good practice of declassification of official historical documents. आपके पास official historical documents declassified मिल जाते हैं. So many a times our understanding comes from US के अंदर presidential documents. Every president after retiring has a presidential library. तो उसके period के कुछ documents आपको मिल जाते हैं. या many people have written books. So we find such information through speculation. अब आप एक ideological spectrum पे चले जाएं तो वहां पे इस idea को आप एक particular language में पढ़ सकते हैं. कोई scholar लिख रहा हो तो आप इसको particular language में पढ़ सकते हैं depending on your belief. So the easy answer to this question, whether India gave its seat to China, permanent seat, is we cannot ascertain that in the absence of any authoritative official documents. Certainly these ideas were floated, but not at any serious level, insofar as we can tell from on the basis of any independently verifiable source of information. But certainly we know that India wanted good relations with China. So from this context, now let's move forward. So what happens? 1979, China starts opening up. Meaning China opens its economy. Now, this is the era of Mao. From Mao, the transition takes place to Deng Xiaoping. All right. So, Deng Xiaoping was a pragmatic leader. He was humiliated during the time of Mao also. He was one of the communist leaders who was jailed, beaten. Public में इस दौरान काफी लोगों के साथ पिटाई की गई थी. The period of cultural revolution. But Mao passes away. And then Mao के आसपास के जो लोग हैं उनको पर्च किया जाता है, जैसे माओ ने पर्च किया था अपने अपोजिशन को. Mao's wife and Mao's close advisors, it was considered were running the policy. So आज भी माओ के बारे में बहुत ज्यादा चाइना बात नहीं करता. Mao is considered to be the most respected leader. So his mistakes were ultimately किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा? नहीं, Deng Xiaoping में नहीं, Mao's wife and Mao's advisors. But Mao presided over a considerably difficult period in China's history, destructive period. So now Deng Xiaoping came. Deng Xiaoping is a pragmatic man, right? So he may have visited Singapore. Singapore सुना है आपने? Singapore was ruled by Singapore. The Prime Minister of Singapore. बिना phone. That's a bad habit. That is where you are basically, teaching your brain to always rely on external sources of information. You don't remember, that is fine. Point to cut nahi rahe yahan pe, right? So he visited Singapore. Singapore started as a small city state, and in a quick period, it transformed itself into a developed country, and it relied on the opening up of economy, liberalization of economy. So Deng Xiaoping, it can be argued, may have learned it from Singapore. Singapore has a significant population of Chinese origin. Singapore has 3 major ethnic communities. Chinese, the largest, then you have the Malays, and then you have the Indians. 3 significant communities there. So he visited Singapore, he looked at Singapore, and he realized that ultimately, if you don't have a strong economy, ultimately
सारी बातें भूल जाओ. It is about fulfilling the needs of the people. Any government's legitimacy depends on why do we elect governments or why do we give our powers to the government, because we want government to fulfill our needs. So that is what Deng Xiaoping understood. ये अब ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करते हैं, पहले अपना सुधार करते हैं. So opening up of economy under Deng Xiaoping happens, and again here the relations, opening up of relations where it started under Mao with US was instrumental. So China कहाँ से develop होता है? When it had good relations with US, Chinese students are going to American universities. Caltech जैसी यूनिवर्सिटी है, MIT जा रहे हैं या UCLA जा रहे हैं, higher learning institutions of the US, and they learn it from there. So China benefits from opening up of relations with US. Its students now are welcome at US universities. So even Xi Jinping went to US as a student, stayed with an American family. So ये हो रहा है. And then American companies, right? So basically you at this point in time have student exchanges. That is how you start creating the human resource that is required. So that is happening, and then you have investments flowing from USA. क्यों? Because there is a significant period in world history in which you will find there is something called deindustrialization happening in the West. क्या हुआ, कैसे होती है economic trajectory develop? So generally modernization theory कहेगी कि every country would develop ultimately along the same trajectory, right? They would move away from feudal agrarian mode of economy to industrial mode of economy where there would be production of goods, and ultimately in the advanced stages technology, reliance on technology and services would increase as part of the economy. ऐसा ही होता है, पहले मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई, फिर उसके बाद जनरली दीज इकोनॉमीज बिकेम सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कोयला जलाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग से पोल्यूशन होता है. ऑलराइट, आप मैन्युफैक्चरिंग से क्या लो पेइंग जॉब्स ही क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज में हाई पेइंग जॉब हो सकता है. फॉर एग्जांपल इन यूनाइटेड स्टेट्स वेटर or a server in a restaurant can earn significantly more than an Indian worker working the entire day in an MSME टिप्स के माध्यम से. तो सर्विसेज के अंदर आपको ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स मिल सकते हैं. सो वेस्टर्न कंट्रीज देन थॉट प्रोडक्शन इज स्टिल रिक्वायर्ड बट इट इज पॉल्यूटिंग, इट इज नॉट क्रिएटिंग हाई पेइंग जॉब्स. तो कहां होना चाहिए? गरीब देशों की तरफ देखो. लुक एट दी पुअरर कंट्रीज वेयर स्टिल पीपल आर willing to work in abysmal working conditions and they are ready to work on cheaper or low wages. So then manufacturing shifts from west, low cost manufacturing. कभी high cost high tech manufacturing नहीं उन्होंने इधर भेजा. Low cost manufacturing shifts from west to Asian countries. That's why most of the economies in Asia became export oriented economies, Asian tigers or even China. So you have investments coming from, and then you have the development of manufacturing that is happening in China, that you see. This is the period in which it started, right? So this is something that Deng Xiaoping may have learned from Lee Kuan Yew, the Prime Minister of Singapore, whom our Prime Minister also respects a lot. So Lee Kuan Yew was a significant leader of that generation, 1960s onward, right? So here Deng Xiaoping adopts a pragmatic policy that China needs a sustained period of economic growth. बड़ी बड़ी बातें आप तभी कर सकते हैं जब आपके जेब में पैसे हो, या फिर आपके नाम के आगे लिखा हो IAS, right? तो this is a lesson. Deng Xiaoping said at that point in time, China should bide its time, China should hide its capabilities, and China should never claim leadership. मतलब in simple words, ज़्यादा फैंटम ना बनो. In very simple words, बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है.
अपने टाइम का इंतजार करो, अपना टाइम आएगा, राइट? बाइड इट्स टाइम. चाइना शुड बाइड इट्स टाइम. चाइना शुड हाइड इट्स कैपेबिलिटीज. ज्यादा दिखावा मत करो, ऑल राइट? बुरी नजर लग जाएगी. अब ट्रेडिशनल तरीके से समझना हो तो, राइट? छुपा के काम करो, नोट्स छुपा के बनाओ, साइड वाले को पता चल जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड नेवर क्लेम लीडरशिप. जब तक केपेबल नहीं हो तब तक डोंट क्लेम लीडरशिप. क्यों? फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है, फालतू की चीजों में. तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए भी ये अच्छा है, राइट? दैट यू शुड बाइड योर टाइम, हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड नेवर क्लेम लीडरशिप. क्यों? क्योंकि ये लेबर का काम बाकी है, ऑल राइट? हार्ड लेबर is what is required. So that is what he said, and that is a pragmatic thing, right? That says a lot about how China from there to here has come to. जिनसे लिया उन्हीं को अब चैलेंज करने की पोजीशन में आ गया है. अगर चाइना ये दिखा देता कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम तुमसे झगड़ा करने वाले हैं, तो क्या चाइना को वो पैसे मिलते? The investments came from Japan, the investments came from United States, and that is where China benefited from. So thereby what you would see is that by the 1990s, China started reform in 1979. All right, 8, 9, that is the period. And by 1990s, the growth is visible. Industrial base has been created. People are being employed, right? States' revenues are increasing. And China is generally benefiting from. So in this period, you would not see China making a lot of noise. You would not see China making a lot of noise because China realizes. So this is the period in which China rises, starts rising. So when China starts rising, what you see is suddenly in the 1990s, by late 1990s, it is very clear that China is going to become the next economic powerhouse. And when you are an economic powerhouse and a history like China, it's but obvious that you would also become a military power. So then the US realizes that अगला challenge कहाँ से आ रहा है? By this time USSR has collapsed. पुरानी दोस्ती का basis तो कुछ बचा नहीं है ना. USSR has collapsed. In the 1990s, Russia is a very inward looking country. Russia is in transition. Russia को समझ में नहीं आ रहा. Russia has confused identity. ये भाई, who are we? Are we a Western country? Are we an Eastern country? What are we? So Russia is no longer a challenge for US for this small brief period. In this period, US के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, celebration है that we have arrived. Now we are the sole superpower in the world. But every great power also thinks, where would the next challenge come from? And it becomes very clear that differences in values. America being a liberal democracy, China still being a single party ruled state. Differences in interests. So first of all, economic competition would come. And then inevitably military competition would come. So it was very clear that world starts noticing China at the end of 1990s. So then China says, don't worry, we have a peaceful rise, right? So from bide your time, hide your capabilities, never claim leadership. अचानक से नोटिस किया कि चाइना तो बड़ा हो गया, ऑल राइट? जैसे आप भी when you visit your relatives, so many times they would tell you, oh, ये तो इतना बड़ा हो गया, लास्ट टाइम जब देखा था तो छोटा सा था, राइट? तो that is what the world, especially the West, realized that, oh, चाइना तो अब चैलेंज बन रहा है. तो चाइना से डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी. जैसे आप कहेंगे, कहाँ आंटी, मैं तो अभी भी बच्चा हूं या बच्ची हूं, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. So peaceful rise of China is what China is saying, right? Then you have around 2008. Around 2008, what happens? Global financial crisis. And by this time, you would see greater assertion of China is visible on many matters. Greater assertion. Still not an open outright challenge, but greater assertion of China is quite visible. By this time, arguments about decline of US have been in place. Why? Global financial crisis was primarily a crisis in the American market. ऐसा था. So then China started thinking कि अपना time आ गया.
and maybe that may have been a premature calculation. So after 2008, gradually what you would see, especially after coming to power of Xi Jinping, in this period you will see greater assertion of China. So under Xi Jinping, China has been talking about a century of humiliation, that look, in the past we had been humiliated, and then China has been talking about the great rejuvenation of the Chinese dream, meaning we have a rightful claim to leadership in global politics. Either you acknowledge that, or we will take steps to ensure that you acknowledge that. All right? My way or the highway. Either you accept my way or I will create a highway. So that is what is happening in the context of China, if you see, broadly speaking, broad brush of history. So that's why you would see in the 1990s, for example, China had again threatened Taiwan. तो क्या हुआ? बिल क्लिंटन एट दैट पॉइंट टाइम प्रिसाइडिंग ओवर अ कॉन्फिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कॉन्फिडेंट था उस समय. ये आपको अंतर भी नजर आता है. बिल क्लिंटन एंड जो बाइडेन. बिल क्लिंटन इन हिज 40s, जो बाइडेन इन हिज 80s. राइट? जब जो बाइडेन बात कर रहे हैं तो it does not instill confidence. I like the gentleman for what he has done in the past, right? But abhi doesn't seem to be decisive, right? Presided over a doomed American withdrawal from Afghanistan, presided over in a period when Russia realized कि अभी तो हम कर सकते हैं अटैक यूक्रेन के ऊपर, right? So अमेरिका seems to be weak. ऐसा लगता है आपको? अगर आप दुनिया को देखें आपको लगता है अमेरिका वीक है. And now you have Xi Jinping, who is relatively younger, but he is going to be there in power at least till 2024. At least till 2024. उधर पुतिन साहब है, उनकी उम्र किसी को नहीं पता, right? Whether, for example, अभी बीच में रिपोर्ट आई कि he may have stomach cancer. So he may be going to die, but what happened, we don't know. So you know that now Putin is going to be there. And in India, you have Prime Minister Modi. So in a particular sense, what you would see is that we can't make sense of the world around us exactly. हम नहीं समझ सकते कि क्या होने वाला, ऊंट किस करवट बैठेगा. So that's why a certain degree of caution is always required here. But in 1995, there was another Taiwan crisis. So then Bill Clinton at that point in time ordered his naval fleet to move through the Taiwan Strait. तो तब इतना काफी था कि US would basically send its naval fleet to Taiwan Strait and China would say, okay, चलो अब आगे नहीं बढ़ते हैं. Today it is not the case. China feels it is strong. China feels US is not in a position to challenge China directly. US's commitment on Taiwan is weak, right? क्यों? For US, for China, remember Russia-Ukraine war से सीखो. For China, Taiwan is a core issue. For US, Taiwan is a peripheral issue. China के लिए core issue है, US के लिए peripheral issue है ना? यानी आप when you are preparing for UPSC, your primary concern is your own selection. You may have friends, you may be interested in their selection, but your selection is the core issue and the selection of anyone else is a peripheral issue. So किसके लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे? कोर के लिए. कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि दूसरों को ज्यादा पढ़ा देते हैं. ऐसा भी होता है that लोग कहते हैं कि यार मैंने उसको पढ़ाया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. It may happen, but that is something that you would see is the changed world in which we live. China always has been there. China has the potential. There has always been a question mark about the attitude of China. There have been always concerns about China. So अभी एक और चीज क्या हो रही है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो,
सो वी आर टॉकिंग अबाउट, और देखो इस पीरियड के अंदर चाइना के राइज का एक साइन क्या है, चाइना इस तरह के प्रोजेक्ट्स सोच सकता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, राइट? सो देन टुडे व्हाट वी सी दैट दिस इज द केस, बट 2000 से ये बात प्रोजेक्शन शुरू हो गए कि दैट अल्टीमेटली देयर वुड कम अ टाइम, कितनी देर तक आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं, राइट? कितनी देर तक आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ चीता इज फास्ट in short distance, in short spurt, it can run really fast, but बहुत लंबी दूरी तक नहीं, स्टैमिना का क्वेश्चन आ जाएगा, योर मसल्स वुड स्टार्ट हीटिंग अप. सो देन दैट इज ऑल्सो विद इकोनॉमीज, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, देयर वुड कम टाइम when your economy would start heating up, which means you will develop, for example, inflation, you will develop surpluses जिसके लिए कोई मार्केट नहीं है, ओवर कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे आप. If not anything else, what would happen? Your economy grew on the basis of one strength that you had, which is what? Cheap labor, right? Low wages. Now China is moving from a low middle income country to a high middle income country. So what would happen? Macroeconomically, wages or expectation for wages would rise. So when that happens, manufacturing in China would not remain cheap. So that is one idea that people have thought about, that Chinese economy may be heating up. आज से नहीं 20 साल से बात कर रहे हैं हम. That China consecutively showed more than 10% double digit growth. India showed single digit growth most of the times. India went 8% sometimes. But then after that, after a while, your growth would stop or slow down. So that is something that we see in the case of China. Then you have the COVID-19 crisis. So then initially you see productivity stopped in China, right? Lockdowns, etc., etc. That is something that happened. And then you would see Chinese economy was the first to open up. So China grew while the world receded. But if the world is receding, then it means that demand for Chinese goods may also be affected. आपको बेचना है तो दुनिया में मार्केट चाहिए. These are all complicated factors which are playing out. Economic crisis कभी भी आप जज नहीं कर सकते immediate scenario में. It builds up. So there have been arguments about China's economy slowing down. Today what is happening? You find reports regarding a real slowdown in China. For example, for the second quarter, Chinese economy has grown with a rate of 0.4%. 0.4% of growth rate is what we know Chinese economy has clocked this year. Secondly, China has a large built up inventory of real estate. And Chinese state is cracking down on speculation on real estate. बना तो लिया, right? Generally, India के अंदर भी there is a real estate bubble, right? Real estate inventory is there. Much of the inventory is unsold, but there is also demand for. तो middle class को घर चाहिए, और घर किसके पास है? जिसके पास भी बहुत ज्यादा काला पैसा है. कौन घर खरीदता है? ऐसे ही लोग घर खरीद रहे हैं, right? जो भी है आप भी खरीदेंगे. So real estate sector, it seems in the Chinese economy is dragging it down. And then now China is facing a peculiar situation जहां पे COVID खत्म ही नहीं हो रहा है. So China has adopted a policy of zero COVID. So then there are lockdowns, blackouts in different cities. So for different reasons, people are saying that China may be slowing down. Whether it is happening or not, we don't know. 20 साल से मैं ये argument सुन रहा हूं कि ऐसा हो रहा है. जब ये होगा तो अचानक से होगा, बट जब अचानक से भी होगा तो सब पे असर होगा, राइट? बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ इंटरट्वाइंड इन अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड लिंकेजेस, राइट? सो फॉर एग्जांपल, यू इंपोर्ट इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम चाइना. कुछ बनाने के लिए भी आप चीजें चाइना से मंगाते हैं, आप चाइना को एक्सपोर्ट भी करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते होंगे. So there would be a sort of mix of result if China falls down. China systemically has become important. So Chinese slow down. इससे क्या हम हिस्ट्री से कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं? हिस्ट्री से कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं. कहां जाएंगे अब हम हिस्ट्री में? 1920
9 नहीं, 1929 मत जाओ, आप अमेरिकन क्राइसिस की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1960s में चले जाओ। 1960s में चाइना में क्या हुआ था? फेमीन, फेलियर ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, cultural revolution. So when domestic policy does not work, what do? We focus on foreign policy. So there are two primary reasons to be concerned about what happens in China and what China does. One, Chinese leadership may be keen on strengthening the legitimacy of the Chinese Communist Party, and legitimacy for the long term can only be ensured through परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, चाहे मिलिट्री लीडर हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो। बहुत लंबे समय तक कहानी सुना के आप नहीं रह सकते। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, राइट? सो देन डोमेस्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना? देयर इज अ लीडर, शी जिनपिंग, हु इज गोइंग टू बी इन पावर फॉर द foreseeable future. He is associated with the idea of strengthening China, great rejuvenation of Chinese dream, meaning expansion of Chinese interests. Domestically, China has fault lines. For example, its Xinjiang province, Uyghur Muslims, Tibet autonomous region, all of them have quest for autonomy. So domestically, when economic performance of China goes down, you find that there may be chances that people in China may start protesting, right? So you would see an internal consolidation of the authority of Chinese Communist Party in China. And externally, what you would you see? If there is differences inside, what do? You rally people on the border. You start making issues of foreign policy matters of domestic policy. So you may see internal issues in China translating into external aggression, right? China already has a claim to great power status globally. वो तो है ही, तो चाइना उसके लिए जो कर सकता है वो करेगा. We would see greater activism of China, but we would also see that domestic developments in China, be it economic slowdown, be it internal fissures, dissensions, they would be sought to be compensated by the leadership by focusing on foreign policy issues, border issues, right? So that's why, can you see what happened in 2020? Galwan crisis. It's a matter of what China is doing externally. It is also a matter of what is happening in China internally. So that these are the ways in which you can understand China's current position in global politics. तो इतना लंबा समय लिया मैंने आपका, होपफुली किसी को बुरा नहीं लगा. Is there anyone who is dissatisfied with what we have done so far? Would you be, नहीं, कोई ऐसा है जिसको कोई डिसेंशन हो कि ये क्या किया आपने? Would you feel comfortable reading about China now in the newspapers or whatever sources that you are reading? बोलिए हाँ या ना? That's what I wanted, because ultimately your preparation is going to be your effort, not my effort कि मैंने कुछ लिखा दिया, कल कुछ चीजें चेंज हो जाए, परसों कुछ चीजें चेंज हो जाए. So you have a framework. So now let's start talking about in this particular context. Time frame आपको clear है, context clear है. अब हम बात करेंगे major issues between India and China. I hope it would be easier. So first issue that we are going to talk about is border. Before that, of course, the dissension is because of break. ब्रेक के बाद आइए, ब्रेक के बाद मेजर इश्यूज के बारे में बात करते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज कम बैक टू योर पोजीशंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's get started. So we have so far talked about China is in this great detail because I feel there is an obsession with China. Everybody is obsessed with China and you want to research on every topic. Taiwan, 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 etc. So I wanted to give you a lens that you can learn from history certain patterns, what happens, domestic difficulties, foreign policy, how relations between different countries change, and how then that may be relevant for India. That is the simple purpose, no, nothing else. And understand that everything is an argument ultimately.
that it is argued China's economy is slowing down, right? So on and so forth. So you all have to think it in the context of issues with India. So first of all, let's talk about the issue of border, or let's take a question. So we had started with a question on difference between referendum and plebiscite. First of all, both referendum and plebiscite are considered to be instruments of direct democracy, right? So it depends where exactly are you talking about. Referendum generally is considered to be a way of involving the larger populace, everyone in a country, on a particular matter of political importance, including constitutional questions. All right. So in some countries, for changing a question, important constitutional provision, you have a referendum. Direct democracy दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी? Switzerland, right? So that is where you will find referendum. When important questions have to be decided, potentially it is open to everyone, to the entirety of nations. Plebiscite is on specific issues, right? Specific and contentious issues. That's one technical difference. Otherwise, both are instruments of direct democracy. So plebiscite you generally have on the issues like deciding the territorial status of, legal territorial status of any or any part of the country, right? So plebiscite कहाँ पे हमने देखा mention? जूनागढ़ के अंदर, राइट? डायरेक्ट वोट. सो दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल होते हैं, राइट? कॉन्टेक्स्ट का फर्क पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जैसे जहां पे ये डिफाइंड होता है, इंडिया के अंदर रेफरेंडम का और प्लेबिसाइड का हम इस्तेमाल नहीं करते रेगुलरली, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात नहीं है. सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है प्रोविजन, वो ये है कि रेफरेंडम आर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, ऑलराइट, एंड प्लेबिसाइड्स आर not about constitutional questions. They can be about any particular contentious question. जब एक बार राष्ट्र के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण इशू आ जाए और उसमें आपको लोगों की राय लेनी हो और वो राय ऐसी हो which is let's say make and break, तो उस समय हम क्या इस्तेमाल करते हैं? plebiscite, right? So plebiscite you may see is used sparingly. कभी कभी रेफरेंडम आप आमतौर पे करते रह सकते हैं मेजर पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, पर इंडिया के अंदर ना तो जनरली रेफरेंडम का प्रोविजन है, ना ही प्लेबिसाइड का प्रोविजन है. ये जो भी बातें हुई ये कब हुई थी? ऑन द बेसिकली ऑन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट फॉर्मूला शुड बी देयर टू डिसाइड ए क्वेश्चंस लाइक जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर. ईदर दे केम फ्रॉम प्री इंडिया positions or they came from documents like UN documents, right? So ऐसे हम differentiate करते हैं, but generally दोनों को instruments of direct democracy माना जाता है, alright? ये आप समझ सकते हैं. तो यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम क्लियरली बता दें कि ये नीटली ये अंतर है, खास तौर पे सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? बट आप समझ सकते हैं कोरिलेशन क्या है, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कई बार डिफ्रेंशिएट करते हैं. अमर, कैन वी से India's position that is permanent seat but not at the cost of China was the reason we have not been offered a permanent seat? It might have been offered if our stance were different. First of all, it is going into speculation in history, so that is something that I can't do, right? A teacher cannot predict, a teacher cannot speculate कि ऐसा हुआ होगा. Well, you can simply understand that the way permanent category was decided was on the basis of what? The arrangements in the Second World War, allied powers. So जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, victors write history ऐसा कहा जाता है. So then if you have some sense of how UN was created, you find it was created through a series of conferences. First there was Declaration of the United Nations, right, enunciated by United States and then signed by other countries. Then you have याल्टा कॉन्फ्रेंस, माल्टा कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऐसा सुना होगा आपने. तो यहां पे डिसाइड हुआ, तो पहले ही डिसाइड हो चुका था. दूसरा, एक्सपेंशन का क्वेश्चन, कितनी बार एक्सपेंशन हुआ है रियल टर्म्स में सिक्योरिटी काउंसिल का, बता सकते हैं आप? परमानेंट कैटेगरी कभी भी एक्सपैंड नहीं हुई है बनने के बाद से, कभी एक्सपैंड नहीं हुई है, कभी भी. सो अगर ये एजेंडा पे था, इंडिया को ऑफर करने की बात ही नहीं है. बात यह है कि यूएन का रिफॉर्म कितने लोग एग्री करते हैं. तो फंडामेंटली हम
इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों किसी ने ऑफर नहीं किया, उनसे पूछना पड़ेगा। किसी के पास ऑफर करने के लिए अधिकार भी नहीं था पहली चीज तो देखिए यूएन की परमानेंट कैटेगरी का कभी भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, पीरियड, यू शुड रिमेंबर इट। इट इज what it is since the time it was created. So expansion का कोई मेजर क्वेश्चन आता यूएन पे, डिबेट डिस्कशन होता, तो यहां पे हमारी बात क्लियर हो जाती है, हमको समझ में आ जाता कौन क्या कह रहा है, राइट। एक ही बार यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ, वो भी नॉन परमानेंट कैटेगरी में 1965 में, फ्रॉम 6 to 10, राइट। अर्लियर देयर वर 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स, नाउ देयर आर 10 नॉन परमानेंट, एक ही बार हुआ है नॉन परमानेंट कैटेगरी में। सो परमानेंट कैटेगरी के अंदर रिफॉर्म, परमानेंट कैटेगरी के अंदर एक्सपेंशन अपने आप में कॉन्टेंशियस क्वेश्चन रहा है, तो उसको फिर अब हम आज से समझ सकते हैं। आज ये बताओ कौन इंडिया को ऑफर कर रहा है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट? ऑफर करने की बात आ रही है तो कौन ऑफर कर रहा है इंडिया को सीट? इंडिया को लड़ना पड़ रहा है ना। इंडिया सेज दैट वी वांट यूएन रिफॉर्म्स, एंड वी वांट यूएन रिफॉर्म्स प्राइमरली थ्रू substantial means such as reforms at the Security Council. There we want expansion of the permanent category, right? तो उसका क्या हालत है यूएन में? परमानेंट कैटेगरी पे जो हम डिमांड कर रहे हैं, आज तो हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब हम डिमांड कर रहे हैं, अब चाइना के खिलाफ भी ग्लोबल ओपिनियन है, तो क्या अभी भी कोई प्लेट पे लाके हमको दे दे रहा है? सो आज की थोड़ा लिमिटेशन समझो कि कल हमको मिलने वाला था, स्पेकुलेशन जाने का कोई फायदा नहीं है। तीन चीजें मैंने आपको बता दी। परमानेंट कैटेगरी वाज अ फिक्स कैटेगरी व्हेन द यूएन वाज क्रिएटेड, वो डिसाइड कर लिया था जिनको करना था। दूसरा, परमानेंट कैटेगरी के अंदर कभी भी रिफॉर्म नहीं हुआ है आज तक यूएन के अंदर। और आज जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमने कैंडिडेचर के मेरिट को हाईलाइट करते हैं, लार्ज डेमोक्रेसी, लार्ज इकोनॉमी, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूएन, लार्ज मिलिट्री, ऐसा हम कहते हैं। और उसके बाद भी हम निराश हैं यूएन से। क्यों? क्योंकि यूएन ने कभी सीरियसली रिफॉर्म की बात की नहीं। पहले इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन होता रहता था, लोग बात करते थे, उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड निगोसिएशन हो रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद प्रॉब्लम यह है P5 कभी भी एग्री नहीं करता कि किस टाइम फ्रेम में रिफॉर्म होना चाहिए। जिनके पास पावर है वो अपना पावर नहीं छोड़ते। एकमात्र चेंज क्या हुआ है? एकमात्र चेंज क्या हुआ है? परमानेंट कैटेगरी में एकमात्र चेंज क्या हुआ है? पीआरसी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना से पीआरसी बना दिया, पीआरसी को मेंबर बना दिया, है ना। तो चाइना के खिलाफ बातें कब हो रही थी? जब एक तो कोरियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूएस और चाइना के बीच में डिफरेंसेस डेवलप हुए। तो दुनिया को समझे बिना आप इंडिया को नहीं समझ सकते, और इंडिया को समझे बिना दुनिया को नहीं समझ सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। तो उस समय भी कौन था परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का? पीआरसी या रिपब्लिक ऑफ चाइना? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा मौका था यूएन बनने के बाद कि चाइना मेंबर था ही नहीं। चाइना तो यूएन बनने के साथ ही मेंबर था ना। और आज यूएस हमको कहता है हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रांस कहता है, फ्रांस इज अ क्लोजर फ्रेंड, फ्रांस कहता है कि हम इंडिया को बनना चाहिए, यूके कहता है हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, रशिया कहता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। चाइना कभी एक आध बार कहा होगा, लेकिन एम्बिगुअस अप्रोच है। लेकिन कब? ये सारे देश ये कभी नहीं बताते कब। जब कभी होगा हम सपोर्ट करेंगे। वो जब कभी आप ही कर सकते हैं ना, वो जब कभी तो आप ही कर सकते हैं। तो आप कभी कमिट क्यों नहीं करते एक टाइमलाइन पे रिफॉर्म के? तो आज की रिफॉर्म की पॉलिटिक्स ऐसी है, तो कल की रिफॉर्म की पॉलिटिक्स कैसी रही होगी? स्पेसिफिकली व्हेन इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट, भाई गरीब देश है, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? अधिकतर लोगों को यही लगा होगा ना कि ये भाई इंडिया क्या बात कह रहा है, तो हमारी बात क्यों नहीं मानते? तो कल की भी तो वही पॉलिटिक्स रही होगी, अगर ऐसा आप समझने की कोशिश करें तो। ऑलराइट, ऐसे आप समझने की कोशिश करें तो आज हम काफी पावरफुल हैं, स्टेट कैपेसिटी बढ़ गई है। 1991 के रिफॉर्म के बाद से पैसे आ गए हैं इंडिया के पास, स्टेट की कैपेसिटी बढ़ी है। तो आज हम सोच रहे हैं, लेकिन क्या आज भी हम रिफॉर्म करवा पा रहे हैं? नहीं करवा पा रहे हैं। इसके बावजूद कि अब सारे देश कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। कहते हैं हर बायलैटरल विजिट के अंदर एक पॉइंट होता है, क्या? इंडियाज कैंडिडेचर। हम ऐसा कहलवाना चाहते हैं उनसे कि एक बार कह दो कि आप हमारा सपोर्ट करते हो। कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी होता है? होता है?
तो ये आप समझने की कोशिश करें. Might have been offered, I don't know, maybe, perhaps if India had joined, let's have a thought experiment. India joined the side of US. US ने ऑफर कर दिया इंडिया को, रिफॉर्म होगा ही नहीं क्योंकि चाइना और यूएसएसआर ब्लॉक कर देंगे. ऑलराइट, हमने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया, रिफॉर्म होगा ही नहीं क्योंकि यूएस ब्लॉक कर देगा. तो वेयर इज द सीरियसनेस इन दिस इशू इज समथिंग दैट बहुत सारे लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट आई वुड ओनली से ट्राई एंड फाइंड आउट डीक्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. एक तो तरीका है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी हैज ओल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, आप पढ़ना चाहें वहां जा सकते हैं, वो कर सकते हैं. बट मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया कि कैसे इस सवाल को हम समझ सकते हैं. बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेंड एनीवन और अपोज एनीवन, ये मेरा काम नहीं है. राइट, दोज हु हैव पास्ड अवे, मेरा काम नहीं उनको डिफेंड करना. हिस्ट्री इज देयर, एवरीबडी कैन रीड. और जो आज है उनको आज जज लोग अलग अलग तरीके से करते हैं अपने अपनी पसंद के हिसाब से, बट हिस्ट्री इज देयर, हिस्ट्री वुड जज. Right, so let's go forward rather than going in history. So let's look at a map to first of all start discussing the India China boundary question, first issue that we take between India and China. Right, ये धुंधला सा मैप है पर काम चल जाएगा हमारा. पर्पस केवल एक ही है, आपके मटेरियल में भी एक मैप दिया हुआ है. ऑलराइट, सो वही मैप है ये. अब इस मैप से हमको केवल एक चीज जाननी है, what is the length of India China border? 3488 kilometers of border. Right, now this border is divided into how many sectors? 3 sectors. ये बस समझना है आपको. तो बेसिकली जनरली जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्टर है वो ये है कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न सेक्टर. सो वेस्टर्न सेक्टर basically comprises eastern Ladakh. All right, eastern Ladakh, and then there is a region here which is called Aksai Chin, large territory which is called Aksai Chin. Right, ये यहां पे है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. There is second sector of the border. This is called the middle sector. Middle sector is हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. इसको कहते हैं हम मिडिल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. इसके बाद है ईस्टर्न सेक्टर. सो जनरल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न सेक्टर ट्रेडिशनली हैज बीन अरुणाचल प्रदेश. राइट, अरुणाचल प्रदेश जनरली ईस्टर्न सेक्टर इसको कहते हैं. जब हम बात किसकी कर रहे होते हैं, इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इश्यूज क्या है इंडिया चाइना के बीच में. तो पहला डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज इज द इशू. सो देयर बाय वी सी द इश्यूज इन डिफरेंट सेक्टर्स. वन इज द वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न लद्दाख अक्साई चिन रीजन. अनदर इज द मिडिल सेक्टर, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश रीजन. एंड देन देयर इज द ईस्टर्न सेक्टर, ट्रेडिशनली द अरुणाचल प्रदेश. सो ईस्टर्न सेक्टर में हमारा बेसिस है बाउंड्री का the McMahon line. McMahon line emerged out of 1914 शिमला अकॉर्ड. ऑल राइट, एक शिमला एग्रीमेंट है, वो कब हुआ था, 1972. इसको कहते हैं हम शिमला अकॉर्ड. शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रिटिश इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तिब्बतन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तिब्बत एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना केम टू दिस एग्रीमेंट कि यहां पे कैसे होने चाहिए बाउंड्री. अब इसमें मोटा मोटा इशू क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, in the eastern sector, China has refused to recognize the validity of the McMahon line. What India considers to be a fixed boundary, China contests that. All right, जमीन किसके पास है यहां पे, हमारे पास है. अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. कब बना अरुणाचल प्रदेश स्टेट, अब स्पेकुलेट करने लगो आप. ऑल राइट, टू स्टार्ट विथ इट वाज कॉल्ड नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. ऑल राइट, नेफा रीजन देन मोर और लेस was converted into an Indian state, अरुणाचल प्रदेश. राइट, और ये है सिक्किम.
ये बता दो, व्हेन डिड सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया? 1975। अभी मैं थोड़ी देर और देखूंगा तो 76 भी हो सकता है। चलिए, ये आपके लिए असाइनमेंट है। पहले तो ये आप अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि देखो एक पेपर 1 में पेपर है जिसको कहते हैं रीजनलिज्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। उसके अंदर एक चीज आती है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हैज हैपेंड इन इंडिया इन फेजेस। फर्स्ट, integration of princely states. Second, linguistic reorganization of states. Third, you have creation of states like Haryana and Himachal Pradesh. Fourth, you have incorporation of states like Sikkim into the Indian Union. Fifth, you have creation of states like Goa and Arunachal Pradesh. Fifth, you have creation of Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh. Sixth, you have the creation of Telangana. ऐसा हुआ है, मोटा मोटा इतना तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री से, तो थोड़ा हिस्ट्री दोहरा लेंगे जाके। तो ये 3 सेक्टर। सिक्किम का ये केस है दैट टिल 2003 ब्रॉडली चाइना showed it in its map to be a separate entity. It did not acknowledge its inclusion into the Indian Union. After 2003, you see that China started showing it as part of the map of India, Chinese map of India. So now, in this sense, we see that China does not contest the borders here. China says that border is settled in the Sikkim sector. So there are 3 sectors which become relevant in the context of the borders, right? Now let's look at each of these sectors. Each of these sectors. So here is the western sector. This is the western sector. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि the area maps, the particular location maps are not available publicly. आप public के लिए नहीं है. It is either available to the highest positions in the government or the military commanders who are there. कौन सी चीज कहाँ पे? So basically, if you see in this particular region, India's position on its border comes from one fact, one major fact, which is what? Which is that the state of Jammu and Kashmir, the princely state of Jammu and Kashmir, decided to merge with India. And when it merged with India, whatever was the territory of the princely state of Jammu and Kashmir is a territory of India. So the revenue maps of this region, from the princely state period, show this to be the boundary. All right, this to be the boundary, right? So ये हमारा टेरिटोरियल कॉन्सेप्शन है जो इस बात से आता है कि प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. इट एक्सीडेड विद इंडिया, right? But what we find is that during the British period, or historically also, there are no significant geographical barriers which create the basis of a border. All right. B, this is an uninhabited area. This is an uninhabited area. So there is no basis of habitation which can decide where exactly is the border. And generally it was an ignored area, right? At most you would find nomads going there. And C, what you see is Britishers did not make an effort to determine the border here seriously, right? So they had different agreements with China differently. So you have various lines. For example, this is what can be called the foreign policy line of 1873. तो जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे लाइन खींच दी अंग्रेजों ने. फॉरेन ऑफिस लाइन ऑफ 1873.
Then you have the Macartney-Macdonald line. ये है Macartney-Macdonald line, right? Macartney-Macdonald line. ये दूसरी लाइन है जो ब्रिटिश पीरियड से आती है इन द ईयर 1899. 1899 के अंदर मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को लेके एक एग्रीमेंट कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स वर सर्वेइंग दिस एरिया, ब्रिटिशर्स engaged with Tibet, engaged with China. So from time to time they have different conception. Foreign policy line, Macartney-Macdonald line, and this particular line can be largely said to be, what is India's claim, similar to the Johnson line. All right, Johnson line came into existence in 1865 on the basis of British survey maps. So A, historically, B, geographically, it has been difficult to determine borders in this particular region. मुश्किल रहा है इस रीजन में बॉर्डर डिटरमिन करना कि कहां बॉर्डर है. And then during the British period you have confusion created by different conceptions of lines demarcating broadly the areas controlled by the Britishers or area under, or just simply area is controlled by the Britishers, area not controlled by the Britishers, right? So that is something that would happen, conception of multiple lines, Foreign Office line, Macartney-Macdonald line, Johnson line, तो ये हो रहा है वहां पे. Now our basis then is simple legal basis, which is that state of Jammu and Kashmir, princely state of Jammu and Kashmir, merged with India, and its revenue maps showed this to be the border, which largely coincides with the Johnson line. तो जो हमने inherit किया वो हमारी borders है, हम कुछ ज्यादा और claim नहीं कर रहे हैं. समझ में आ गई आपको बात? हम कुछ और ज्यादा claim नहीं कर रहे हैं. तो when in 1949 PRC came into existence, India was confident in its feeling that border तो clear है भाई, border is clear, there is no question of any dispute with China, right? Our dispute is with Pakistan. Initially you would see we have some significant efforts at bringing about peace between India and China, friendship between India and China. So in 1954 we signed an agreement called the Panchsheel Agreement. Panchsheel Agreement सुना है आपने? Panchsheel Agreement is simply an agreement on trade and intercourse in the Tibet region. Agreement between India and China on trade and intercourse in the Tibet region. So what is it that it did majorly? India relinquished any special claims in the Tibet region. Special claims that existed from the British time. Britishers के टाइम पे क्या हुआ था? Initially मैंने आपको क्या बताया? That there were trading posts, there were communication posts in Tibet. So India said that we are not going to maintain them. हमें जरूरत नहीं, Britishers had did it. So that is assuring China that we don't have any intention towards any of your territories, right? If you want to control Tibet, that's your problem. And why would China want to control Tibet? There is a fundamental reason for it, geographical reason for it. Most of the rivers in China come from Tibet, all right? Come from Tibet. So that is one reason. And then they were in a way in the process of consolidating their borders. So we signed 1954 Panchsheel Agreement, which is about trade and intercourse in Tibet. So thereby, first of all, we recognized China's rights over Tibet, or more than that, we relinquished any special rights that we may have had before the British period. ये समझ में आ गई आपको बात? तो 1954 Panchsheel Agreement then is also important because it spells out the expectations in India-China relations. All right, 1954 Panchsheel Agreement is important because it spells out the expectation. जब मैं धीरे बोल रहा होता हूं, जब मैं दोहरा रहा होता हूं, तो मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं. The 1954 Panchsheel Agreement spells out the expectations in India-China relations. These are the principles that we spelled out in the context of India-China relations. How would we like to develop our relations with China? Are you aware of those 5 principles? Are you aware of those 5 principles? कहीं पे है written material में? है? निकालिए जरा, मुझे दिखाइए. बहुत सारे लोग तो मटेरियल में ही खो जाते हैं.
और जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए उस चीज पे ध्यान नहीं देते। गो टू चैप्टर 1, पेज नंबर 5, देखिए मदद कर दी इन्होंने। चैप्टर 1 पेज नंबर 5 क्या कहते हैं? व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स? इंडिया चाइना रिलेशन वुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर territorial integrity and sovereignty. Number 1, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. Number 2, mutual non-aggression, peaceful relations, mutual non-aggression. Number 3, नॉन इंटरफेरेंस, ना तो हम आपके बारे में कुछ कहेंगे ना आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, नॉन इंटरफेरेंस। नंबर 4, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, ना तो हम आपसे छोटे हैं ना आप हमसे छोटे हैं, बराबर के हैं। ऑलराइट, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इसी बेसिस पे होगा। नंबर 5, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिया एंड चाइना, दुनिया बहुत बड़ी है, आप भी रह सकते हैं हम भी रह सकते हैं, लेट्स एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट पीसफुली। These are the 5 principles enunciated in पंचशील। पंचशील कहां से आ रहा है? पंचशील आपको मिलेगा इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी में भी। ऑलराइट, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी, पंचशील। इट इज कमिंग फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज। पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस। सो दैट इज बेसिकली इंडिया स्पेलिंग आउट इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशंस विथ चाइना। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे, क्या हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं। हैज इट चेंज्ड सो फार? हैज इट चेंज इन करंट कॉन्टेक्स्ट? इन द करंट कॉन्टेक्स्ट हैज इट चेंज? दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यूएन में इंडिया कहेगा तो क्या कहेगा? मैंने आपको स्टेटमेंट याद दिलाया था शुरू में कि यूएनएससी में डिबेट हुई। व्हाट डिड इंडिया सेड? कलेक्टिव सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड till countries don't respect or continue to violate territorial integrity and sovereignty of other countries. यही इंडिया कहता है अभी भी। So these are A, first of all, mentioned in 1954 agreement in the context of China, but B, they are broadly larger principles of India's foreign policy. So that is how we started with China. So that is why you would see initially there is this feeling of Hindi चीनी भाई भाई। All right, हिंदी चीनी भाई भाई सुना है आपने? These are the slogans that initially described India's relations with। अब जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे बोलते थे कि कोई फॉरेन से आया हो, भाई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, जी भी लगाया था ना आपने, जी लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात ना करें, मैं कह रहा हूं वो इंडिया की पोजीशन थी। ऑल राइट, मैं कह रहा हूं वो इंडिया की पोजीशन थी। अगर आप एग्री नहीं करते इसका मतलब है कि फिर आप कुछ अलग ही सोच रहे हो। सो हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज सीन इट, राइट। पर्सनालिटी का जो एनालिसिस हम तब करते हैं जब आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आता है, दैट हाउ डू इंडिविजुअल्स shape foreign policy, but there also you will find it is structural realities which shape foreign policy. So understand these are 5 principles of India's foreign policy enunciated in an agreement with China. So there is two-fold significance of it. One in the context of China, another in the context of India's foreign policy, what India stands for. What India stands for. So then in the context of China, if the question is, did the policy succeed? The clear answer is no. Because China is in violation of all of these principles. हमारे प्रिंसिपल हैं भाई, अपने प्रिंसिपल हम नहीं छोड़ते. Alright? But if Panchashil is a failure, it is in the context of India-China relations where we find that China eventually is in violation of all these principles, and the failure and limitation of the Panchashil principles were evident in the 1962 war. That first of all, this expectation did not result in stable relations with China in the initial period, and ultimately ended up in being violated by China when China aggressed against India in 1962. All right. So that is basically how you can look at this
पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो किसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, और क्रिटिसाइज करना है तो जनरली फॉरेन पॉलिसी में अच्छा होता है कि आप बाहर वाले को ब्लेम करें, राइट, रादर देन योर ओन कंट्री। एंड देन डोमेस्टिक डिबेट जब पार्लियामेंट में होगी, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट जब आएगी, पेपर क्लासिफाई होंगे, तो ये तय होगा कि किसकी किसकी गलती थी, कहां कहां थी। 1962 वॉज अ पॉलिटिकल फेल्योर, वॉज एन इंटेलिजेंस फेल्योर, वॉज अ मिलिट्री फेल्योर फॉर इंडिया, राइट। बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ हु इज द अग्रेसर, China is the aggressor. There are two aspects to it. One, there are various scholars writing on it. So one set of scholars would say that it is India's policy of India's forward policy that basically made China to aggress against India. Other set of scholars would say that it was inevitable that China would attack India. Henry Kissinger says that it was Mao's decision to divert attention from domestic failures, right? So Mao famously has been quoted by Kissinger as saying that sometimes it is necessary to teach even a friend a lesson. All right, if India wants a war, let's give India a war. ऐसा उनका सोचना है, पर हमारा सोचना क्या था? So ऐसा था, 1954 is the time when we are pursuing these relations with China, but we also then start realizing soon that it is not going to be as easy as we thought. Why? Because we realized that China has built a road linking Tibet with Xinjiang, है ना, ये रहा, ये वो रोड, ये तिब्बत रीजन है। सो तिब्बत की तरह एक और रीजन है जो चाइना कंट्रोल करता है, वो क्या है? सिनकियांग। दिस इज सिनकियांग, ऑल राइट। जिनजियांग जैसे मैंने बहुत सारे लोग कहेंगे, जिनजियांग कहो तो कोई आपको करेक्ट करेगा नहीं, इट इज सिनकियांग। व्हेन आई से जी जिनपिंग, लोग करेक्ट करते हैं शी जिनपिंग। वेल, आई एम नॉट अ नेटिव चाइनीज स्पीकर, नॉर आर यू, सो इट इज फाइन, जब तक समझ में आ रही है बात, स्पेल सही कर दो बस, ऑल राइट। सो देन we realize that China has built a road through the territory that we think is our territory. So this is first realization of there may be territorial differences. We before that had found that some of the publications of Chinese government had shown some of the territories that India thought were its territories as part of Chinese territory. When India raised this issue with China, as Chinese do, they never say yes, they never say no. They said, oh, these are old map, they have not been changed. ये तो पहले से मैप है, ये चेंज नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि चाइना ने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब हमने समझा कि हाँ चाइना मतलब चेंज कर लेगा बाद में। These are old maps. So that is how this started. Seriousness of the issue was realized in 1957 when we realized that there is already a road here. So then what happened? There was the Prime Minister of China at that point in time, Chinese premier called Chow En-lai. Chow En-lai and Mr. Nehru at the same time were heading their countries. Mao was the leader of China, but Chow En-lai was the prime minister of sorts. So then there is a meeting between these two people. Chow En-lai comes to India. These issues are raised. Chow En-lai goes to China, says, यार ये इंडिया में क्या है, लोग सब मुझे मोरालिटी का ही भाषण देते रहते हैं। India told Chow En-lai that look, this is our territory, and what is a small piece of territory in comparison to friendship with a great country like India? Why are you maintaining this hard line? So Chow En-lai का अगर वो बात सुनेगा तो आप ऐसा पाओगे कि Chow En-lai को लगता है कि मैं तो सॉल्व करना चाहता हूं। इंडिया ने बता दिया कि नहीं नहीं, ये हमारी जमीन है, इतनी हमारी जमीन है, और है तो है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। So that is the position that India took, that our borders are very clear. There is no question of saying that this is not our territory. China thought that maybe India would make certain compromises. India made it clear that it would not make compromises. So diplomatic efforts which had started with great hope did not yield a result. And India then also embarked on certain degree of realism in foreign policy. So पंचशील था, लेकिन उसके बाद हमने एक फॉरवर्ड पॉलिसी भी अडॉप्ट की।
फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, इसका मतलब क्या था? अ सर्कुलर वेंट टू द मिलिट्री वेयर द मिलिट्री वाज आस्क्ड टू पेट्रोल टू द फर्देस्ट एक्सटेंट ऑफ व्हाट इंडिया क्लेम्स टू बी इट्स बॉर्डर्स। मतलब हमारे जो सिपाही है, हमारे सोल्जर्स, दे स्टार्टेड पेट्रोलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर जो हम क्लेम करते थे, राइट? सो वी स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड। और वहां पे ये भी था कि अगर फोर्स यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, हाँ, जितना एक्सटेंड तक पॉसिबल है। सो इनिशियली वी थॉट दैट आवर फॉरवर्ड पॉलिसी इज सक्सेसफुल, है ना, क्योंकि हमने चाइनीज को कई जगह से भगा दिया, राइट? वी थॉट कि चलो इस मिक्स से काम चल जाएगा, इतना यूज ऑफ फोर्स से काम चल जाएगा, ऐसा हमको लगा। तो देयर वाज अ फॉरवर्ड पॉलिसी। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट forget that we had a forward policy. Forward policy was about patrolling these areas, furthest extent of what India claimed. तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स आप सुनते होगे, राइट? पेट्रोल करने हम वहां पे जाते हैं परमानेंटली, बहुत सारी जगहों पे हम नहीं रहते हैं, बट पेट्रोल करते हैं अपना बॉर्डर। बट till 1961 it seemed that forward policy is a success. 1962 came a surprise attack by China, starting in the month of October, continuing in its main phase in the month of November. Massive Chinese attack across the western and eastern sector, right? 1962 India-China war. So that happened. Now in that war we were not prepared, right? We were not prepared. First of all, when forward policy was also being implemented, our soldiers did not have adequate weaponry, nor we had major experience of mountain warfare. So militarily we were unprepared. And then China attacked in full force. So our deployment was also not adequate. So China was able to come very far into what India considered to be its territory, right? And in the eastern sector, the fear was that they may run over the Assam plain, they may come towards mainland India. But surprisingly at that point in time, just as the Chinese had come, they also decided to go back. They came forward and they then went back. They did not continue, at least in the eastern sector they did not continue. So then the Chinese started formulating their position. They made it clear to India that they have territorial claims. So then they started maintaining a presence in this particular region. So it was very clear the western sector was what the Chinese were keen on. All right. And then the Chinese said that both sides, we are moving 20 kilometers behind the line of actual control. वहां से line of actual control का idea आता है. For them, the line of actual control was the line that separated Indian armed forces from Chinese armed forces in the month of November 1959. That is the position that they gave us. That okay, we are moving behind 20 kilometers of the LAC, you should also do that. So what was India's position? India's position was that imagine a situation where there is a thief who comes to your house. एक रात एक चोर आपके घर में घुस जाता है, and then he scouts the house and then decides कि I will live in the living room. और उसके बाद वो आपको कहता है कि living room is mine, you keep the rest of the house. So then what would you do? What would you do? You ideally would not never accept the conditions. That is what India says. What LAC are you talking about? This is our land. And we didn't accept the idea of any LAC at that point in time. We said it is our land, you are the aggressor, you illegally control our territory, so you get out. Alright? So that is the position that India adopted. That there is no conception of LAC. This is our territory, you have aggressed, you illegally occupy our territory. Right? Then what happened after that? After that, for longest time, the issue was now under the carpet. India-China stopped fighting, there were no wars. 1968, there were some tensions on the Sikkim boundary.
From time to time there were skirmishes on the border LSE, और वो आज तक चलता है. There was only one war, that was 1962 war, and after that a situation of no war, no peace on the border and differences on the issue of boundary that continue so far. So ऐसा हुआ. अब थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर इश्यूज हैं. So basically you understand three sectors. In the western sector, what is the problem? What is the problem according to India? One, China occupies 38,000 square kilometers of territory. It's a territorial question. Demarcation of boundary का केवल क्वेश्चन नहीं है. हमारे लिए बाउंड्री तय है हमारी. ऐसे कैसे डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री का क्वेश्चन है? It is a question of China's illegal occupation. So for India, the issue in the western sector is China remains in illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory, where in Aksai Chin, जिसको चाइना क्या कहता है? Aksai Chin. So our territory, 38,000 square kilometers of Indian territory is illegally occupied by China. Additionally, you can also think now that if it is about Jammu and Kashmir, more than 5,000 square kilometers of territory was ceded by Pakistan to China in 1963. So China is also in the occupation of the territory that was ceded to it by Pakistan in 1963, that is in the Saxgram Valley. So in total, if we see, 43,000 square kilometers of Indian territory for us is under the illegal occupation of China. But mainly in the western sector, it is the 38,000 square kilometers of territory, which is the Aksai Chin region. All right. That's basically what our issue is. So here what we find is that a 1962 war hardened the positions. बात चलती रहती शायद कुछ और हो जाता या नहीं होता, हम नहीं जानते. But 1962 war hardened this position. So since then, this is what India's position is, that India is not willing to compromise. Right? We understand that this is an uninhabited area. It is an uninhabited area. So it lacks natural markers. बहुत आसान नहीं है यहाँ से फिर high mountain ranges start. So natural markers have not been there which decide where the boundary is, right? For example, natural marker क्या होता है? इंडस. इंडस जैसी कोई बड़ी रिवर होती जहां पे पहले से ये डिटरमिन होता कि ये बाउंड्री का बेसिस है. ऐसा कभी नहीं था हिस्ट्री में. सो नेचुरल मार्कर्स, एंड देन देयर इज लैक ऑफ historical documents in this area. So geography, history, both make it difficult to determine border in this area, and that has been further made difficult by the Chinese aggression of 1962. So that is basically what the difficulty in this particular area is. So that is from India's perspective. On the western sector, what is the issue? Illegal occupation of land by China. Now in the eastern sector, what is the issue? McMahon line is not acknowledged by China. So China at times has shown preference to accept certain British era agreements, at times has not accepted any British era agreement.
तो चाइना के पास ये एक पावर है कि वो कह सकता है हम नहीं मानते। तो कुछ लोग पूछते हैं ऐसा कैसे? भाई ऐसा ऐसे ही ना, मैं अब आ सकता हूं, आपका फोन उठा लूं, बोलूं मेरा फोन है, ये तो मैं कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने रिसोर्सफुल हैं, कितने पावरफुल हैं कि आप मेरा क्लेम का विरोध कर सकें। तो इसके लिए कोई लीगल बेसिस वगैरह नहीं है स्पेशल, बट दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना इज नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिस that India considers to be the basis of demarcation of the boundary, right? Now, apart from that, China claims Arunachal Pradesh. China claims Arunachal Pradesh as South Tibet. China says तिब्बत हमारा है और अरुणाचल प्रदेश क्या है? साउथ तिब्बत है। तो यहां पे चाइना का क्लेम है। यहां पे क्या है? हम कह रहे हैं चाइना इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है हमारी जमीन का। तो यहां पे क्या है? हमारी पोजीशन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो दैट बेसिकली हैज गिवन राइज टू द आइडिया दैट इन द पास्ट चाइना हैड प्रेफर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डील। इट इज कॉल्ड द पैकेज सॉल्यूशन। ऐसा बहुत सारे लोग लिखते हैं कि चाउ एन लाई ने एक पैकेज सॉल्यूशन ऑफर किया था। वो पैकेज सॉल्यूशन क्या था? आप हमारी बात मान लीजिए वेस्टर्न सेक्टर में, हम आपकी बात मान लेंगे ईस्टर्न सेक्टर में। पर ना तो ये कंसिस्टेंट है, ना थ्रू आउट चाइना ये नहीं कहता रहा है, ना तो ये किसी ऑफिशियल लेवल पे एक्नॉलेज्ड है, और ना ही कोई सवाल उठता है कि इंडिया इस पैकेज को एक्सेप्ट करेगा। आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? मैं कर लूंगा इन द राइट सर्कमस्टांसेस। क्यों कर लूंगा? क्यों कर लूंगा? बिकॉज आई वुड थिंक, ये मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रहा आप लिखो, मैं बस बोल रहा हूं कि भाई कभी कभी सामने वाले को ये बताना भी जरूरी होता है कि सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं क्यों कर लूंगा? क्योंकि मैं अपने जितनी भी मैंने पढ़ाई की उसे ये जानता हूं कि दुनिया भर में जमीनों के झगड़े में घर बर्बाद हुए हैं, देश बर्बाद हुए हैं। सो अगर राइट सर्कमस्टांसेस के अंदर राइट डील मिल जाए तो आपको टेरिटोरियल इश्यूज को जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए, अदरवाइज ये पेंडिंग बने रहते हैं। ये मेरा मानना है ना? पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी डील पब्लिकली अनलेस सर्कमस्टांसेस चेंज ड्रास्टिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑल राइट, so I would like to resolve this issue as early as possible. India would like to resolve this issue as early as possible, but not on the basis of the so far described formula of the package deal. All right, so China ने कभी ऑफर किया हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में चाइना ज्यादा कीन क्यों है? Why is China keen on the western sector? Because that territory is strategically important for China. For what? At that point in time, for connecting Tibet with Xinjiang province. All right, that's why it is important for China. अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कभी चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, कभी पैकेज डील की तरह इस तरह की बात आती है कि चाइना चाहता है क्या? तवांग। Why? Outside of Tibet, Tawang is the most significant center of Tibetan Buddhism. Tibet autonomous region controlled by China, उसके बाहर Tawang is the most important center of Tibetan Buddhism. So China sometimes is keen on having Tawang. तभी आपने देखा होगा whenever there is a visit to Tawang, China raises objections. तो ऐसा लोग कहते हैं, ये कहने की बातें आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा कई बार हुआ है, बट जो जनरल पोजीशन है वो ये है। समझ में आ गई आपको बात? एंड देन व्हाट यू सी इज आफ्टर दैट वी फाइंड दैट दिस इशू हैज बीन reflected in standoffs on the border. So for example, in Arunachal or in Sikkim, we have had instances where there was skirmishes in recent times also. And उसके बाद क्या हुआ है उसको समझने के लिए हमको एक सिंपल सी बात जानने की जरूरत है कि जब मिडिल सेक्टर हम कहते हैं, मेन प्रॉब्लम है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर. In the middle sector, it is considered to be easy to resolve because there are
no major points of contention. There are some areas in which there may be differences. For example, in the middle sector, there are mountain passes, plains. For example, in the state of Uttarakhand, there is something called the Barahoti plains. यहाँ पे difference है, but generally the middle sector is considered to be the easier to resolve. Middle sector is generally considered to be easier to resolve because here we don't have any major territorial or historical difference, है ना? तो ये basically middle sector के बारे में. तो अब हमको क्या जानना है? अब हमको ये जानना है कि what are the ways in which India and China have tried to resolve and manage the issue. What are the ways in which they have done so? So first of all, you should realize that after 1962 war, the issue has remained contentious, a bone of contention between both the sides. Thereby what you would see is 1960s, 1970s, India and China have low-key ties, meaning they are not talking to each other. There is no war also happening. So there is no, या तो आप इसको वॉर से सुलझा सकते हो, मतलब एक बार हम डिसाइसिवली अगर चाइना को हरा दें, पूरा का पूरा तिब्बत कब्जा कर लें और वो उस चीज को इन्फोर्स भी कर दें चाइना के ऊपर कि चाइना उसका विरोध नहीं कर पाए, तो सॉल्व हो गया मामला, है ना? इफ वी डिफीट चाइना डिसाइसिवली मिलिटरीली, वी रिजॉल्व दिस इशू. और if both of us reach to an agreement diplomatically, we resolve the issue. So 1960s 70s में क्या हो रहा है? Relations are low key, ambassadors वापस बुला लिए हमने, very low key relations. The issue is on the cold burner. We are not talking. We are spelling out our position. India is very clearly spelling out its position on the border. 1979, Foreign Minister Shri Atal Bihari Vajpayee visits China. Mr. Vajpayee is the foreign minister at that point in time. He visits China. So that is first significant level of political opening up with China. But that results in failure. Why? Because on the day that Mr. Vajpayee visited China, China attacked Vietnam. All right. So then India opposed that. So there was no question of this opening up leading to any protracted process or sustained process. 1974, India and China had exchanged ambassadors. So 1974, who became China's ambassador? India's ambassador to China? आपने सुना है श्री KR नारायणन के बारे में? क्या सुना है? Who is Mr. KR Narayanan? Who is Mr. KR Narayanan? The former president of India, the first Dalit individual to be elected as the President of India. He was part of the Indian Foreign Service and then he served as India's ambassador to China in 1974. So that was the period of opening up. But major opening up happens in 1980s, 1988. In what context? इसलिए आपको context बताया था. So there is a change in leadership. थोड़ा समय बीत गया है. जब भी थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ी गर्मी शांत हो जाती है. All right? जमीनों के झगड़े में भी आपने देखा होगा, गांव में जमीनों के झगड़े होते हैं. So murders भी हो जाते हैं उसमें. That is something that happens. That is quite common, and sometimes it would be a minor issue of land. So land is such a sensitive issue. So then you think either कोर्ट के अंदर लोग ठंडे हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर 30 साल बाद फैसला आता है, 30 years. So basically when time passes and there are no major instances of violence or war, you may see that a space for diplomatic process opens up. Circumstances changed. China, in this time, who is the leader of China? Who is the leader of China? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping is the leader of China. China is in what process? Economic opening up. In 1988, what is happening in India? What kind of India is there in the late 1980s, early 1990s? First of all,
फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलिस्ट तो हम हमेशा कहने के लिए ही थे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the old economic model was failing, was crumbling down. We had adopted a model of import substitution, planned economy, mixed economy, to have a separate model. We didn't want to become Soviets, we didn't want to become United States, right? So we had an ambition of having our own model, but that model failed in the context of India to a certain extent, right? To a certain extent. It created a welfare net, you have to accept that. And India, ये freebie culture की जो बात हो रही है, India for the longest time would require social welfare measures by government. So then economically we see we are moving towards change, transition. जो economic reform है, वो पहली बार it seems the move towards economic reform starts in the late 1980s. Why? आप economic logic को नहीं झूठ बोल सकते हैं. All right, you cannot deny the economic logic. So the failure of the previous model then is leading to India moving towards economic changes. Number one, 1980s is also a period of political transition और difficulties है. क्या हो रहा है? Assassination of Mrs. Gandhi, anti-Sikh riots in Delhi. Before that, Operation Blue Star. Punjab is on the boil. Assam is on the boil. There are multiple insurgencies है देश में. तो ये सारी चीजें हो रही हैं. और चाइना को क्या चाहिए? चाइना चाहता है एक स्टेबल पीरियड जिसमें इकोनॉमिक पे वो ध्यान दे पाए, राइट? सो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आर देयर. इंडिया कैनॉट अफोर्ड अ हॉट बॉर्डर, चाइना कैनॉट अफोर्ड अ हॉट बॉर्डर. दोनों देश अब इस फेज में है दैट they want stability on the borders. They want stability on the borders, but for their own reasons. All right. चाइना को थोड़ा सा अब डर लगने लगा है सोवियत यूनियन को देख के. सोवियत यूनियन collapsed, so China did not want to collapse. China wanted stability, a stable period. तो अंदर उन्होंने stability लाई तियाननमेन स्क्वायर करके. All right. There were pro-democracy protests, and students were handled with a heavy hand in China. ये चाइना में ही ये अथॉरिटेरियन स्टेट्स में ही होना चाहिए. आइडियली डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस चलता है, राइट? चाइना सप्रेस्ड दोज डेमोन्स्ट्रेशंस. Tiananmen Square, students were killed. So that is a period that we are talking about. So thereby there is an opening up whereby Prime Minister Rajiv Gandhi, and I am not basically naming an individual, but I'm just telling you the context. Deng Xiaoping have a meeting. Prime Minister Gandhi visits China on the invitation of Deng Xiaoping, my young friend, right? Deng Xiaoping as an old individual, Rajiv Gandhi is considered to be a young politician. So then the young meets the old. India is represented by a young person, China is represented by a old person. इन सब का कोई significance नहीं है इसमें, personalities की बात नहीं है, but circumstances. So in this period what you see is multiple joint working groups are created, including on the issue of border. So first time India and China put the issue on the table for negotiations. Joint working group on the issue of border is created. So this is the starting point. Then there are multiple other visits. Chinese president comes to India, Indian prime minister goes to China. Process continues. So then we have now two agreements flowing from this process. 1993 and 1996. 1993, 1996. Can you name these agreements? चाइना के चैप्टर में ये एग्रीमेंट्स का नाम है. These are called Peace and Tranquility Agreement and Confidence Building Measures Agreement, right? So these are the agreements which are signed. Peace and Tranquility Agreement, peace and tranquility where? On the border.
along the LAC, and then second agreement is confidence building measures. For whom? For the militaries, right? How would the militaries conduct themselves? Confidence building measures in the field of military. So that is the agreement that is signed. So basically what is happening, and here for the first time the word along the LAC, line of actual control, is used. सामने बैठ के आपका जो ये बाइलेटरल चलता रहता है ये ठीक नहीं है. चलिए इतना ही कह सकता हूं मैं. स्टूडेंट धर्म का पालन करें. सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इज साइंड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाउ इंडिया एंड चाइना आर डेवलपिंग व्हाट कैन बी कॉल्ड अ मोडस विवेंडी, अ फॉर्मूला फॉर फंक्शनिंग. मोडस विवेंडी, अ फ्रेमवर्क. So A, it means that in the given circumstances both sides agree to maintain stability on the border, which they now refer to as LAC. What is it that they are agreeing to? Maintaining stability on the border. They agreed to maintain stability on the border by agreeing to abjured the use of force, that military force would not be used on the border. Peace and tranquility. What would they do? They would maintain peace and tranquility on the border. ऐसा कह रहे हैं एक दूसरे को. पर्पस क्या है इसका? पर्पस क्या है? ये मोडस विवेंडी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? फॉर ए स्टेबिलिटी ऑन दी बॉर्डर. ऐसा कर रहे हैं. कैसे करेंगे? ए बाय फर्स्ट एग्रीइंग टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, मीनिंग ensuring that military force or force would not be used on the border. ये agreement है. And thereby, which is the instrument of using force? Militaries. So what would they do? They would take such steps which would increase confidence in each other militarily on the border. So ये formula बन गया. किस चीज का formula? हम आपकी बात से agree नहीं करते, आप हमारी बात से agree नहीं करते, लेकिन हम इस बात पे agree करते हैं कि बॉर्डर को स्टेबल रखने की जरूरत है जब तक कि सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिल जाए. और पहला पॉलिटिकल कमिटमेंट है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दूसरा कमिटमेंट है मिलिट्रीज के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एस्टैब्लिश करेंगे. मेन काम मिलिट्री का है यहां पे. तो ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया. विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर कोर पोजिशन, द कंट्रीज एग्रीड टू stabilize the borders. That is what they are doing to manage the issue, right? And then flowing from this, you have details added to the agreement. 2005 protocol was added to the agreement. Agreement हमेशा क्या करता है? इस तरह का agreement एक मेजर विजन देता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक्स पे बात करनी है. सो प्रोटोकॉल 2005 में जब ऐड होता है वो क्या कहता है? वो सिंपली यही कहता है, व्हेन देयर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज वी वुड इन्फॉर्म ईच अदर ऑन द एलएसी. एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बॉर्डर नहीं बढ़ाएंगे, ब्रिगेड लेवल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली इट ऑल्सो सेज, सपोज इफ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फ्लाइट एयरक्राफ्ट क्रॉसेस द बॉर्डर, इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, हो सकता है कि उड़ते उड़ते एक्सीडेंट में वो उधर गिर जाए या इधर गिर जाए, तो क्या करेंगे? कोऑपरेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को. तो इसीलिए जब ये युद्धाभ्यास हो रहा है तो चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि हाँ नहीं तो हमारे एग्रीमेंट का वायलेशन है. क्यों? क्योंकि इंडिया लगातार यही केस बना रहा है. वी हैव कॉन्स्टेंटली बीन एक्यूजिंग चाइना ऑफ वायलेटिंग द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव रीच्ड. इसको हम रिफर करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग, that we have these agreements, and then we have 2005 protocol, and then we have the creation of a working group or working mechanism for coordination and communication
ऑन बॉर्डर इश्यूज। तो एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बना दी है। सो हियर a joint secretary level official of Ministry of External Affairs and also the representatives of the military are part of this working group or mechanism created for working mechanism created for coordination and communication on border issues। तो डे टू डे जो भी होता है बॉर्डर पे उस पर बात करने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया कि मैनेज करते रहें साथ साथ में, जब तक बड़ा काम हो तब तक छोटा काम कर लेते हैं। और उसके बाद ये 2012 में हुआ, 2012, एंड देन इन 2013 वी साइंड अ BDCA। BDCA is Border Defense Cooperation Agreement. So all of them are a source of how India and China practically manage their borders. So for example, practice क्या रही है, जो भी बॉर्डर पे सर्व करता है वो बताता है कि जब चाइनीज मिल जाते हैं तो हम उन पे हाथ साफ कर लेते हैं, कभी कभी वो भी कर लेते हैं, मतलब कि मुक्केबाजी हो जाती है, मारपीट कर लेते हैं, पर वो ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। सबसे पहली बात तो आर्टिलरी जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, बम बंदूक गोली का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाँ मतलब हॉकी वॉकी ये सब डंडे वंडे ये सब चला लेते हैं, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो जाता है। ऑलराइट, पॉलिसी क्या है कि प्रैक्टिसेस हैं इस तरह की कि आप एक तरह की बैनर ड्रिल करेंगे। क्या करेंगे, आप ऐसे बैनर दिखाएंगे, प्लीज गो बैक, यू आर ऑन आवर टेरिटरी। जब आप आमने सामने हो जाएं, दोनों फोर्सेस पेट्रोल कर रहे हैं एक ही एरिया को, तो आप क्या करेंगे, डिसएंगेज कैसे करेंगे, बताएंगे एक दूसरे को यू आर ऑन आवर टेरिटरी। और क्या करेंगे भाई, डिसएंगेज कर लेंगे, तुम इधर चले जाओ हम इधर चले जाते हैं, हो गया, आगे नहीं बढ़ते। तो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वर एस्टैब्लिश्ड। एंड देन यू सी प्रैक्टिसेस लाइक बॉर्डर फ्लैग पोस्ट मीटिंग्स, मीनिंग जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो बॉर्डर फोर्सेस की लीडरशिप है, वो बॉर्डर पे टाइम पे मिलेगी। डेडिकेटेड पोजीशंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर बॉर्डर फ्लैग पोस्ट मीटिंग। वहां पे क्या करेंगे, अगर कोई लोकल इशू है उसको लोकली रिजॉल्व कर लेंगे ताकि बड़ा इशू ना बने। सो प्रैक्टिसेस रिलेवेंट टू मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स इंक्लूडिंग द कंडीशंस ऑफ पेट्रोलिंग वर डेवलप्ड बाय इंडिया एंड चाइना थ्रू दीज एग्रीमेंट्स। तो ये हमने किया। अब साथ में जब ये हमने कर लिया तो इसके साथ हमने और क्या किया, अब हमने कोशिश की कि बॉर्डर को सॉल्व भी करते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल इशू, बॉर्डर को सॉल्व करना पॉलिटिकल काम है। तो पॉलिटिक्स का काम हमेशा लीडरशिप देना होता है, ब्यूरोक्रेट का काम हमेशा रूल इंप्लीमेंट करना होता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकता है पॉलिटिशियन, क्योंकि वो रूल बनाएगा अंत में, और जब एक बार रूल बन गया तो वो इंप्लीमेंट कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट। ये प्रॉपर रोल है। सो ये पॉलिटिकल इशू है, तो पॉलिटिकल इशू है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ मैकेनिज्म कॉल्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन 1988। सो यहां पे यू हैव 15 राउंड्स ऑफ टॉक्स अंडर द जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैकेनिज्म। देन यू हैव द एस्टैब्लिशमेंट इन 2003 ऑफ द SR मैकेनिज्म। SR मैकेनिज्म सुना है आपने, अगर अखबार पढ़ोगे तो SR मैकेनिज्म विच इज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। सो पहले जॉइंट वर्किंग ग्रुप में बात कर रहे थे, अब क्या किया, एक डेडिकेटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने अपॉइंट कर दिया। हु इज इंडियाज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, अजीत डोवाल। ऑलराइट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। सो SR मैकेनिज्म क्या है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, यानी कि अब डेडिकेटेड चैनल है बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, डायलॉग के लिए, SR मैकेनिज्म। सो SR मैकेनिज्म सो फार 22 राउंड्स ऑफ डायलॉग हैव टेकन प्लेस। 2019 में लास्ट टाइम था जब SR मैकेनिज्म में बॉर्डर के रेजोल्यूशन को लेकर बात हुई। उसके बाद से कम्युनिकेशन किस बात पे है, जो गालवान में हुआ उसको रिजॉल्व करने के बारे में कम्युनिकेशन है। बट ये मैकेनिज्म हमने तय किया, और उसके बाद हमने 2005 में साइन किया एक एग्रीमेंट। सो बेसिकली इट्स अ 3 स्टेज सॉल्यूशन प्रोसेस। 3 स्टेज सॉल्यूशन क्या है, 1 एग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, ये हमने किया। ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट है। ये सिंपल क्या है
कि हमारे लीडर ने और चाइना के लीडर ने एग्रीमेंट साइन किया कि यस वी अप्रूव ऑफ द अटेम्प्ट टू अराइव एट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द बॉर्डर इशू, है ना। किस बेसिस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल्स कौन से हैं, वही सब, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, ये बातें हैं। तो ये पैरामीटर्स, हाँ पीसफुल मीन से हम सॉल्व करेंगे। एग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, ये साइन कर लिया हमने। उसके बाद स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 इज बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, मीनिंग ये टेक्निकल स्टेज है। यहां पे आप एक एक एरिया उठाएंगे और वहां पे अपने डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कॉमन परसेप्शन बने। ऑलराइट, सो यहां पे ये इशू है, राइट, रेजिंग द इश्यूज और डिस्कसिंग द इश्यूज इन ईच ऑफ द सेक्टर्स एंड देन एड्रेसिंग द डिफरेंसेस, ये सेकंड स्टेप है इसका। तो ये जो एसआर मैकेनिज्म 22 राउंड जो बात हुई है, हम कहते हैं कि सेकंड स्टेज पे अटका हुआ है। अभी तक हम थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज पे है डिलिनिएशन ऑफ बॉर्डर्स ऑन द मैप एंड अ फाइनल बाउंड्री एग्रीमेंट। तो क्या करेंगे? पहले तो हमने तय किया कि हम बात करके अपना मामला सॉल्व करेंगे। सो दिस एग्रीमेंट इज साइंड इन 2005. Political principles and parameters have been decided. Now we are talking on sector specific approach, technical issues in each of the sector. कौन करता है ये? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। एसआर मैकेनिज्म में ये बात होती है। और जब ये हो जाएगा, यानी जब मुश्किल मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या होगा? एक समिट होगी। समिट में सेलिब्रेट करेंगे हम और स्पेशल सेरेमनी में एग्रीमेंट साइन करेंगे। सुनने में कितना आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल, है ना। लेकिन ये मैकेनिज्म है, ये आप नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, दिस इज द एफर्ट दैट इज मेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू, बॉर्डर बाउंड्री क्वेश्चन जिसको कहते हैं। रिजॉल्व करने के लिए ये किया है, मैनेज करने के लिए तब तक जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो क्या किया है हमने? ये किया। टू काइंड्स ऑफ एफर्ट्स, टू मैनेज द बॉर्डर इक्वेशन एंड टू रिजॉल्व। यहां पे याद रखेंगे कि the first mention of LAC comes in the 1993-1996 agreements. तो for the first time India LAC नाम की किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये LAC है क्या? या ये तो इंडिया जानता है, या चाइना जानता है, या ऊपर वाला जानता है। मीनिंग इट इज अ परसेप्शन बेस्ड लाइन। फॉर चाइना द LAC इज व्हाट इट क्लेम्स टू बी द बॉर्डर, फॉर इंडिया द LAC इज व्हाट इट क्लेम्स टू द बॉर्डर। और बीच में क्या है? बीच में वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, कहां तक वो पेट्रोल करते हैं, कहां तक उनके फोर्सेस जाते हैं पेट्रोल करने के लिए। इंडिया कहां तक जाना चाहेगा? जहां तक हमारी टेरिटरी है। चाइना कहां तक आना चाहेगा? जहां वो कहता है कि उसकी टेरिटरी है। तभी आप देखोगे पांगोंग सो पे तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां पे कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सिचुएशन है। LAC इज अ परसेप्शन बेस्ड लाइन एंड परसेप्शन ऑन द LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिफर्स। So this is a complicated situation. So in the next class जब हम मिलेंगे तो हम सिंपली इसमें ऐड कर लेंगे अभी recent जो डेवलपमेंट्स है आफ्टर 2020, गालवान के बाद जो हुआ है वो हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चाइना को इशू डिस्कस करके रैप अप कर लेंगे और फिर इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। ओके, Ningtham, Huidrom and others have asked to dictate a brief summary of development and progress. So Ningtham, I am giving you a suggestion. The printed material is where the issues that I have talked about has been organized. Organization if you are seeking, the help is there. Go to the printed material. कितने pages में है? Not more than 10 pages. So that is there, already there. I am going to talk about the issues and add what is recent, most relevant, जो नहीं है वहां पे. So Ningtham, my suggestion is for organization, printed material is there. That is there. You can look at it.